right? So usually what students would be doing is that once they've seen that tuition fees is mentioned as $26,000, they'll do multiply by 2 for 2 years, and they'll reach to figure of 52,000 or $53,000, which is not the correct approach. Uh, this is an estimated average cost given by your university. The actual cost would be dependent on the number of credits that you would be picking up in the entire coursework, right? So let's say your university is asking you to complete 30 credits in the entire coursework. So credit system is basically in the undergrad education in India, you were studying usually 5 courses in every semester. Let's say for every one course, you are getting 3 credits, which means for every semester, you're completing 15 credits, right? So in a year, you would be completing about 30 credits. Now, completing 15 credits every semester in US is very difficult, which means if you have taken up 5 courses every semester, your course load would be too huge, and that can have an impact on your GPA. So usually we advise students to take 3 to 4 credits. The number of, sorry, 3 to 4 courses, which means 9 to 12 credits, right? The number of credits that you would be picking, that would decide your tuition. Every university decides tuition based on the credit system. Most universities, I would not say every university, but 90% of the universities are charging you based on the credits that you have paid. So per credit पे सारे calculation होते हैं. So whenever you are in confusion about the tuition fee, visit your university's website, right? Check what is the per credit fee they are charging and what is the number of credits that you need to take in order to be considered as a graduate student. The multiplication of that would give you the actual figure. Let's say $2,000 is per credit fee in your university and 30 credits is your coursework, right? In order to be considered as graduate student, you have to pick 30 courses. So 30 into $2,000, which will give us the amount of $60,000 your tuition. So that's how the tuition fee would be calculated for most universities. Some universities do not have credit structure, but a tiered structure where they've given that if you take so and so credits, 9 to 12 credits, this is the fee we would be charging. For 18 to 24 credits, this is the fee we are charging. So over there also, in tiered structure, you can calculate that what is the minimum credits if I take, what is the tuition amount, and if I go with the maximum credits, what will be my tuition amount. Is that clear? Right? In regards to living expenses, as you can see that for UMass Dartmouth, I think this I-20 is, it's little old. It's of 2021. So these expenses might have increased in the current I-20. If I look at any I-20 for UMass Dartmouth, I'm sure the living expenses would have crossed something as $17,000, $18,000 a year. To be honest, Dartmouth as a place is not so expensive. So all these figures are given as ballpark figure. They are considering that you will be living in best of the accommodation, whereby you would not be sharing rooms, right? You would be having your meals outside. You would not be preparing your own meals. With that, they've come up with the cost. So usually this cost is inflated. So all the living expenses which are mentioned for students going to Boston and New York, I've usually seen that their living expenses would be calculated as something like $25,000, $30,000 a year. But trust me, nobody is going to spend that kind of amount, especially we Indians. We go uh, like we are going to do it in a very frugal way, whereby we'll be sharing it with our roommates, groceries, we'll be preparing our meals together. So all that cost is going to come down. So for the most expensive places like Boston and New York, the 2 year expenditure which we have calculated is about 26, 27 lakhs, right? 2 years of living expenses, which includes your rental, accommodation, utilities, your conveyance, eating outside, going outside often. So all of that cost, if you calculate, the maximum you'd be spending is 27, 28 lakhs for the cities which are expensive, not beyond that. And in the suburban location, this cost would come down to 20 to 21 lakh rupees for 2 years of studies. So that's our estimate, which we have calculated, right? Tuition and fees calculation should always be done based on the credits that you would be taking, the total credits which are required in the coursework, and per credit fee, which university website is telling you, right? Any confusion in this regard? Anything you would like to ask, you can let me know in the chat box related to this thing which we are discussing, the I-20 and your tuition component and living expenses. Right? If that's clear, we'll move ahead. So this is what I have written over here.
You should calculate tuition fee according to per credit charge given by the university website. Don't check fee on third party website. A mistake which many students have done in past is that they've gone to random websites whereby they are checking tuition fees, shiksha.com, Yocket, and they are calculating fees from those websites. A lot of times these information on the websites are not updated. The most updated information you'd be getting that would be coming from the university website, right? So ये गलती आप लोग मत करना कि किसी थर्ड वेबसाइट पे आप जाके यूनिवर्सिटी की फी कैलकुलेट कर रहे हैं. इन पास स्टूडेंट्स हैव डन ग्रॉस मिसकैलकुलेशन बिकॉज ऑफ विच देयर एक्चुअल फाइनेंशियल प्लान गॉट डिसरप्टेड, राइट? कि उन्होंने घर से कितना लिया था, लोन क्या लिया था, वो बाद में कवर नहीं हो पाया है. सो मेक श्योर यू आर नॉट going to these third party websites to check the tuition amount. Okay. Some universities are charging tuition by year. Check how many credits they allow in 1 year. Most students and bank officials wrongly calculate expenses. So this is also one problem which many students have faced, especially when they are going to public banks like Punjab National Bank and all these PSU banks which are there, Bank of India, State Bank of India. So usually bank officials are not aware about this thing which we were discussing. कि I-20 पे जो अमाउंट होते हैं वो इन्फ्लेटेड होते हैं और किस तरीके से कैलकुलेटेड होते हैं, दे आर नॉट अवेयर. सो दे ऑल्सो यूजुअली वुड डू इनटू टू. Whatever is written on the I-20, they'll just multiply it by two, and that's how they are going to calculate your tuition and living expenses, which will give them a very inflated figure, right? So you need to make them understand that these are not the actual expenses. The thing which is mentioned on my I-20, maybe the tuition component is the actual component, but definitely the living expenses which are given are way beyond what you would be spending. So this is the process which I've already told you. How should I calculate my actual amount? So check per credit fee. For example, if the course is of 30 credits and per credit fee is $1,500, the entire tuition fee is $45,000, right? Besides that, some university might charge yearly examination fee, right? Or student fee, or facility fee, activity fee, infrastructure fee. But those fees are usually $1,000 to $2,000, not more than that. Coming to this point, many universities on the I-20 have mentioned that books and supplies are going to cost you $2,000, $3,000, right? Which is not true actually. Uh, if you buy all the books for all semesters and all courses that would be taking, then obviously it would easily cross $2,000 to $3,000, right? Books in US are very expensive. So let's say you're enrolled for 4 courses this semester. जो आपका first semester चालू हो रहा है, उसमें you're enrolled for 4 courses, right? Usually, her course ki book, if you buy it from the market, it would be about $250 to $300. Books are very expensive in US, right? So most of us, again, being Indians, we are conservative. We do not spend that much on buying books. Either we are going to take it from somebody who has already graduated, right? Otherwise, there's a very good rental system in US. There's a website called Barnes and Noble. Amazon is there. They all give you rental books also. So for 4 months of semester, you can just rent that book instead of buying it. Or maybe a lot of books are available on PDF also. So if you're comfortable reading all books on laptop, better to take the PDF, which are usually free of cost, right? So this is how we guys are going to save good amount of money on books and supplies, right? Living expenses we have discussed for majority of places. This is the expenses which I've already told you. ठीक है. अब इंश्योरेंस की एक बात है कि many students have reached out to me that my university is charging me exorbitant money on insurance. And some I-20 it's mentioned as $3,000, $3,500 for insurance. So what can be done about it? Now the problem here is that some universities have made it mandatory that you have to buy insurance from the university itself. You cannot go outside and take insurance, right? I'll tell you one website where you can go and check if your university is restricting you to buy insurance from outside or not. Just a moment. From that website, you will get good clarity कि आप इंश्योरेंस बाहर का बाय कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं. This is the website, ISO Student Insurance Helpline. Right? So a lot of you have reached out to me asking, not sure why it's not opening.
I think some safety issues are going with this website right now, but you can open it later on. So this is not same website. The original website is the one which I was trying to open, this one, right? But I think it's giving some problem right now. But once you enter the name of your university on the website, it tells you whether your university is allowing to take insurance from outside or not, right? अगर यूनिवर्सिटी अलाउ नहीं कर रही है तो in that case you are helpless. You'll have to buy that plan, even if it's a very expensive plan. You'll have to take it, right? And buying insurance in US is must. Your health cost, if you do not buy insurance from US companies, it's going to be very expensive even for small thing. I'll just tell you about one of the incidents that happened to one of the incoming students. Once I reached there, there was a first year student. She landed and it was just about a week's time that she was in US. She was just planning and contemplating to take insurance plans because my university did not restrict us to take their insurance. So we were free to take insurance from outside. So she was just contemplating about taking one of the plans, and meanwhile, an accident happened where she fell from the stairs and her right leg got fractured. We called the ambulance. Ambulance took her to the hospital. Just for the plaster and this ambulance and everything, the total bill they charged was about $1,800, right? So it's a big amount. And $1,800, I'm talking about the year 2010, 2011. So I'm sure this amount has increased to $3,000 now. So just for getting a plaster for a fracture, they charge $3,000 in today's relative terms. If I talk about, that was roughly the amount of $3,000. That's why insurance is indispensable to live in US. You need to have that. अगर आपका insurance नहीं होगा तो आपकी minor injury, minor things which will happen with you are going to cost you a lot of money, right? So even if the insurance plans are expensive for your university, you must take it, right? छोटी भी कोई चीज होगी. In COVID situation, I remember many of our students who were facing difficulties, who got hospitalized, got best of the facilities which were covered in their insurance plans, right? तो कभी भी shy away मत करना, even if it's costly. That's an investment on your health. You can check that website later on. मैं ग्रुप में लिंक डाल दूंगा इंश्योरेंस की वेबसाइट का, आप वहां से चेक कर लीजिएगा बात. So this is again pertinent to something like for visa process. Many students ask, should I be taking education loans? So again, it depends on your financial preparation, depends on ITR of parents also. Because if you see in the group also, we are posting, these students are posting their visa experiences, where you can see that a lot of students were directly asked by visa officers if they have secured an education loan or not. So usually when you say that, no, I have not secured an education loan, the next question is going to be income of parents, right? And if the income of parents doesn't look sufficient, in that case, visa officer would be suspicious of your savings. And that has happened in past. Two students in past got their visa rejected because of this thing. So what we usually recommend is that even if you do not require education loan, don't use it, but just get a sanction letter for your visa purpose. आपको इंटरेस्ट रेट तब लगता है जब आप लोन को डिसबर्स करवा लेते हैं. सैंक्शन करने का आपको कोई इंटरेस्ट नहीं चार्ज कर रहा है, राइट? सो दैट इज ओनली एडवाइजेबल इन केस योर पेरेंट्स आईटीआरस आर नॉट सफिशिएंट. ठीक है, लॉट ऑफ इंडियन पेरेंट्स हैव सफिशिएंट सेविंग्स, बट आईटीआरस आर नॉट रिफ्लेक्टिव ऑफ दोस सेविंग्स, राइट? कि आईटीआर और सेविंग्स को कंपेयर करेंगे तो एक डिस्क्रिपेंसी लगती है कि एनुअल इनकम इज अराउंड 15 lakhs, राइट? बट जो फिक्स डिपॉजिट एंड सेविंग्स है वो 1 CR के प्लस जा रहा है. So visa officer is not going to understand how this works, right? So that's why it's advisable that you take education loan just for the visa purpose. Usually a question follow hota hai. Whenever they'll ask, have you secured an education loan? You say no. The next question is going to be, what is the income of your parents, right? And that you'll have to justify why with this kind of income they have this kind of savings. So basically you're inviting more questions if you do not take education loan. That's why we usually advise all students to opt for education loan. कितने अमाउंट का लेना है, क्या लेना है, वो हम आपको गाइड कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर I-20 एंड अदर डॉक्यूमेंट्स, और मे बी द एक्चुअल एक्सपेंसेस. उस पर हम गाइड कर देंगे कि आप कितने अमाउंट का लोन सीक करिए, राइट?
Coming to next. So this is one US visa folder in which you'll get all the information which we are going to discuss today, right? From how to steps for visa, how to get your I-20, how to fill your DS-160, right? So all kinds of documents are listed over here. Bank से जब savings account दिखाना होता है, for I-20, what should be the format that is given over here, right? How to create your financial summary, which you'll be showing to visa officer. So उसका एक format है, which you don't need to have financial summary from a chartered accountant. You can prepare this entire financial summary on your own, right? Uh, if something has gone wrong, you would like to update DS-160, how this can be done, right? Jewelry evaluation certificate. Before going to US, what are the list of things that you should be knowing about or you should consider? The process to change university also. Once you have reached US and you would like to change the university, what is the process? Just uh, just remember this, you will only be able to change university in case you have a second university with an admit and with I-20 of that university, then only you would be able to change it. The entire process is given. So you can change university before visa as well as after visa also, right? Provided you have admit as well as I-20 from the other university that you would like to go. So the entire process is explained here, how you can change your university. During US visa interview, how you have to organize your documents in Harmonium folder. That's all given over here, right? And flap one, what documents you would be keeping. So students who are done with their visas, ये आपके लिए helpful नहीं है अभी उतना. But students who would be going, just make sure you're organizing your documents in similar order. ठीक है, इसमें कुछ documents हो सकते हैं जो आपके पास ना हो, वो छोड़ दीजिए आप. जैसे visiting card of the company, if you don't have, leave it, right? You do not have EPF, GPF, CPF, so you can just leave it, right? So this is exhaustive list. Maybe some of these things are not applicable to you, so you can leave them. But this is the format you can keep, right? This is basically organized in such a way that whenever visa officer is asking for certain documents, you would just remember, okay, this document was in flap 2. If he's asking for your GRE or IELTS score, you would just remember, okay, this is in my flap 2, flap 6. तो आप panic situation में नहीं आते हैं. ठीक है, नहीं तो इतने डॉक्यूमेंट्स अगर आप मिक्स करके ले जाएंगे, आई एम श्योर ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम होगी आपको, राइट? सो दिस इज बेटर वे टू ऑर्गेनाइज योर डॉक्यूमेंट्स फॉर वीजा पर्पस. Because you can connect with me after the session, right? I'll help you decide which insurance is better. Is your university allowing you to take insurance from outside, Vikas? Have you checked it with your university? ठीक है, एक बार आप ये चेक भी कर लेना विकास, फिर हम डिस्कस कर लेंगे इसको. ठीक है, विच यूनिवर्सिटी इट इज विकास? जॉर्ज वॉशिंगटन. ओके. We can check that on ISO, Mohit, right? Once the ISO website is functional, just put the name of your university and you'll get to know whether your university is allowing to take insurance from outside or not. चलिए आगे बढ़ते हैं. So these are few things that I wanted to discuss very seriously with you guys. What exactly is US life and culture? What differences you are going to face? So a lot of students they say that once we have reached US, there was a culture shock to us, right? So culture shock वैसे अब तो इतना नहीं होना चाहिए because we have been watching their movies, their shows, web series, lot of things, right? सो उतना कल्चरल डिफरेंस नहीं है, पर हाँ कल्चरली और एकेडमिकली कुछ चीजों के डिफरेंस है जो हम समझ के चले तो अच्छा रहेगा, राइट? जैसे एकेडमिकली इन इंडिया most of you would have attended a college life where morning when you're getting into the college, your classes would be going on and maybe in afternoon or evening they'll leave you, right? So entire day they are going to keep you occupied, multiple lectures happening every day, 6 to 7 classes would be happening and long hours, right? So this is a welcome change that you would see in US life, that classes are not so exhaustive. You will usually see that classes are 3 to 4 hours every day
ये भी ज्यादा बता रहा हूँ. Some students say that we only have 3 hour session or lesser sessions every day, and that too for 4 days a week, right? So you would be thinking that we'll have ample time, free time, right? कि 3-4 hours की sessions है और 4 ही दिन होने वाले हैं, तो बाकी टाइम तो हमारे पास बहुत फ्री है. But trust me, these guys will keep you occupied even despite 3-4 hours of sessions every day. You would see that you are occupied. Why? Because आपको assignment, test, quiz, हर कोर्स का कुछ ना कुछ मटेरियल एक मिला है जो आपको फिनिश करना है. ठीक है. सो मे बी क्लासेस आर ओनली हैपनिंग 3 to 4 hours एवरी डे, बट यू विल हैव टन्स ऑफ थिंग्स टू कंप्लीट, राइट? एक ऑनेस्ट एडवाइस है, आप लोग पाइल अप मत होने देना चीजें. ठीक है. ये गलती मैंने भी करी है और बहुत सारे स्टूडेंट्स जाके करते हैं वहां पहुंच के, कि एक इंडियन एटीट्यूड है हमारा. दैट इंडियन एटीट्यूड इज दैट विल डू इट लेटर. आज ही क्यों करना है? Let's say I've attended a financial accounting class today. They've given me assignment, right? Today is Thursday and the assignment submission date is Tuesday, right? So the Indian mindset says that we'll pick it up maybe on Saturday, Sunday. Abhi itni jaldi kya hai, right? This assignment is due on Tuesday, so I'll do it later, right? But क्या होगा कि कल जब मेरे सेशंस होंगे, क्लास होगी on Friday, I'll get more assignments. By Saturday, I'll have more work to do. So by Sunday, I would realize that I'm overwhelmed with so much of assignments and things to complete. That's why a wise advice is the day you are getting your assignments from your classes, make sure same day you are heading to library. ठीक है. बहुत सारी लाइब्रेरी में थोड़ा सा स्लीपिंग पॉड्स और ये सब भी रहते हैं या रिक्लाइनर्स होते हैं. थोड़ा जाके वहां रेस्ट कर लो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू योर हाउस बैक, राइट? गो एंड विजिट योर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी आफ्टर द एंड ऑफ क्लासेस. Make sure you're trying to complete at least 60-70% of that assignment that very day, then only head back to your room. Trust me, this process would make you so organized that every weekend you would feel that you are not piled up with things. आप हमेशा अपनी चीज बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज कर पाओगे. बहुत बच्चे हैं जो कंप्लेन करते हैं हमें तो कोई टाइम ही नहीं मिल रहा, ना ईमेल्स करने का, ना नेटवर्किंग करने का, जॉब हंटिंग का, बिकॉज आई एम सो मच engrossed in my studies. So they have not structured and planned their studies. So the day you are getting your assignments in US, make sure you are heading to library just after the end of classes. Complete your assignments at least 60-70% of it that same day. Rest आप तोड़ तोड़ के बाकी दिनों में खत्म कर. ठीक है. If you go by this approach, you'll always feel that you are more organized. You always have time to do other things, to get involved in extracurricular activities, to look for internships and other things also, right? So the very important aspect of US, which I felt during my education, was consistent learning. Within India, we all have developed a habit of learning only from the exam point of view, right? When the timetables are out, the exam periodic or timetables would come, then only that seriousness would come and we'll start studying for the courses and subjects. And most of us would be taking help of some guides, reference books, right? Just to pass the examination. So our idea of studying in India was to just pass the examination, get good grades in the examination, but the actual learning was not taking place. This is one difference that you would see in US education, that your learning is consistent. So every week they are going to give you some assignments, test would be given to you, class presentation, quiz, and all of them cumulatively are going to contribute to your actual grades. So there's nothing like final test which will decide everything. जो इंडिया में चला है कि हमारी एक फाइनल एग्जाम होगी सेमेस्टर के एंड पे, एंड दैट विल डिसाइड व्हाट ग्रेड्स वी हैव अचीव्ड, राइट? सो ओवर देयर योर assessment is pretty consistent. Your assignments would contribute 25-30% in your coursework. Your test would contribute 20%. Class presentation 20%. So 4-5 things would be involved. Good part being all of these things they'll tell you well in advance. At the start of the course, आप सब usually एक blackboard करके app use कर रहे होंगे US के अंदर. ठीक है. Blackboard is one feature through which you get your assignments from the professor. जहाँ पे प्रोफेसर क्या क्लासेस लेने वाले हैं, क्या पढ़ाने वाले हैं, वो सब रहता है स्ट्रक्चर्ड पूरे सेमेस्टर का. So all information is already given. Which day he'll be conducting assignments, tests, everything is given to you on the blackboard, right? So blackboard पे आपको ये चीज भी पता होती है कि इस क्लास का ब्रेकअप कैसा है for the assessment. How much would contribute to assignments, what numbers would contribute to test, class presentation, that all is already given to you. तो आपको वरी नहीं करना है ये देखने के लिए कि ये सब कैसा होगा. ये आपके ब्लैकबोर्ड पे information already given होती है, right? Coming to the second part, culturally, how things are different in US.
So these are few things which I think I'll be taking it at the end of the slide. इसके लिए मैंने अलग से कुछ चीजें बना रखी हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा. So I'll take this part later on. We'll move to next thing which all of you guys are currently worried about, finding accommodation in units, right? So that's one problem which many of you are facing, that how to find accommodation. Most of the accommodation maybe which you're looking at, either they are expensive or maybe they are too far from the university, or maybe आपको समझ ही नहीं आ रहा है उसको लेना है कि नहीं लेना. ठीक है, तो इसके मैं कुछ तरीके बता देता हूँ आपको. जो सबसे हेल्पफुल तरीका है, दैट इज बेसिकली कॉन्टेक्टिंग द एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हु आर स्टडीइंग देयर, right? Through LinkedIn and Facebook groups, you'll get hold of students. And in fact, you can reach out to us as well. If your university, the university that you're going, if we have an existing student who is still part of the university, we'll get you in touch with that student, right? ग्रेजुएट अगर हो चुके हैं तो फिर तो उतना हेल्प नहीं होगी. उतनी हेल्प हो सकती है कि वो आपको बता देंगे कि किस विसिनिटी में रहना है, राइट? विच लोकेलिटी इज गुड नियर टू यूनिवर्सिटी, विच इज चीपर, इकोनॉमिकल. So that thing they can help you. But if there is existing student, they can help you in finding accommodation also, right? इसका एक accommodation find करने का एक basic principle है. Always make sure you are tagging at least 3-4 people. ठीक है? Make a group of 3-4 people, 3-4 students who are going to that university this year with you. ठीक है? Make sure you are making groups with people who have got their visas approved. ठीक है, आपने 3 लोगों को टैग तो किया है, उन तीनों के वीजा ही नहीं हुए तो आप अकेले रह जाएंगे. सो मेक श्योर यू आर टैगिंग दोज पीपल इन द ग्रुप हु हैव ऑलरेडी बीन थ्रू देयर वीजा प्रोसेस. आपका ग्रुप बन जाएगा तो आपके लिए एकोमोडेशन ढूंढना बहुत ईजी होगा, क्योंकि इफ देयर इज अ 2 BHK अपार्टमेंट अवेलेबल near to your university, alone you would not be able to take it because it would be too expensive in terms of deposit or signing a lease. But 3-4 people can easily bear the expenses. So make sure that you are tagging at least 2 people, 3 people, 3 to 4 people with whom you are going to look for the accommodation, right? ये बहुत जरूरी है करना. तो आपके स्किल मास्टर से भी आपको स्टूडेंट्स बन जाएंगे जो आपकी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, राइट? सो आप लोगों का जो एक ग्रुप बना हुआ है इन दी ऐप, make sure you guys are active on the app. Do not uninstall it just because you are done with visa process. उसमें कुछ भी आपको फॉरवर्ड्स और हाय हेलो नहीं आ रहे हैं, वो सब सिर्फ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस ही आते हैं आपको, राइट? सो हम इस तरह के और भी सेशंस इन फ्यूचर करेंगे विद स्टूडेंट्स फाइंडिंग इंटर्नशिप, CPT, OPT. सो ऑल ऑफ दैट इंफॉर्मेशन वुड बी कमिंग इन द ऐप ग्रुप. सो मेक श्योर यू हैव पुट योर नोटिफिकेशंस ऑन इन द ऐप ग्रुप. ठीक है, आप उसको इंस्टॉल करके रखिए. उसमें कभी भी आपको बिना काम की चीज नहीं आने वाली है. कई बार मैं उसमें जॉब पोस्टिंग्स भी डाल देता हूँ. ठीक है, एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स बताते हैं कि माय कंपनी इज लुकिंग फॉर अ फाइनेंशियल एनालिस्ट सो एंड सो पोजीशन और इंटर्नशिप की पोजीशन है. सो आई यूजुअली पोस्ट दैट इन द ग्रुप. सो मेक श्योर कि आप लोग वो ग्रुप्स को ऐप को अनइंस्टॉल ना करें और ग्रुप्स को एक्टिवली यूज करें. ठीक है, सो इन द ग्रुप ऑल्सो यू कैन जस्ट पोस्ट योर मैसेज फॉर द यूनिवर्सिटी टू फाइंड अदर स्किल मास्टर स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू योर यूनिवर्सिटी. यू कैन टैग विद देम, राइट? या फिर आप फेसबुक, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप पे भी ग्रुप ढूंढ सकते हैं. वहां पे भी आपको स्टूडेंट्स मिल जाएंगे हु आर गोइंग टू योर यूनिवर्सिटी, राइट? सो लीज, there's one important tip which I have written over here, which is avoid taking lease from for any place. So lease is whereby you sign a contract with owner that for a year you would be staying here. A lot of times signing a lease means that you'll have to pay that entire money also for the full year. So this is going to be very expensive, and contract will put some certain constraints because of which if you do not find that accommodation good, you will not be able to leave it. So avoid करना चाहिए. अगर कहीं पे lease signing है तो आप लोग पूछ के समझ के करो. Connect with some existing students who are studying in your university and ask them whether signing lease with so and so person or so and so housing society and apartment is fine, right? And they'll guide you in this regard. Look for college proximity and commuting convenience on Google Maps. So whenever somebody is sharing, let's say some existing students are sharing accommodation, that this is the apartment we are living in. So just make sure on the Google map you are putting up the name of that apartment, right? And go for directions to your university. University में भी जहाँ आपका campus है, because universities are huge. Sometimes your university will have 300, 200 acres of campus. So it's a huge university. Make sure you're putting correct location within your classes कि आपकी classes कहाँ held होगी. वो location आप डाल के directions पे देखिए what is your commuting time, how much you have to walk, how much you have to use public transport,
Is this entire connectivity feasible, right? Avoid uh, such kind of accommodation or location which are cheaper, economical, but there is good amount of walking. ठीक है, कई बार 40 minutes का walk, 30 minutes का walk है, which is not advisable, right? आप अभी तो कर लोगे, but when winters are harsh, it would become very difficult for you to navigate through those roads, right? So make sure your walking time is 10 minutes, 15 minutes, not more than that. Baki public transport and connectivity kya hai? And if public transport is involved, what are the expenses that you would be making in daily commuting, right? If you're taking some tram or subway, any public transport, what is the monthly expenses that you would be bearing? Make sure कि उसको भी आप factor कर रहे हैं in deciding the accommodation, right? So also fourth is very important point. Don't compromise security for cheap accommodation, which some students have did in past. Just for the cheap accommodation, right? Where expenses were just half compared to the other location. They compromised on security. These were not good location. ठीक है, बहुत सारी ऐसी शेडी लोकेशंस भी होती हैं. सो यूएस एंटायरली ऐसा नहीं कि बहुत सेफ है और हर जगह पे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है. In patches there could be problems, and those patches are usually not advisable to live. Maybe they are cheap in terms of money, they would be asking the apartments in that locality, but you would be compromising on your security. So make sure just for saving few bucks, you are not compromising on this aspect. ठीक है. Rental housing यूएस में usually brokerage free होती है. These are two websites from where Indian students can look for accommodation in their respective universities or places. So sulekha.com, it's a South Indian website, but pretty popular. And Craigslist is also there. Just be mindful about this. Of lately, Craigslist में बहुत सारे scams भी हो रहे हैं. ठीक है, तो कोई सिर्फ आपसे फोन पे बात करके आपको पिक्चर्स भेज रहा है, do not send them any money from here. Visit the location physically once you are in US, and if you find it comfortable, then only deposit money to them. यहाँ से किसी को money hand over नहीं करना है, किसी के account में transfer नहीं करना है. आप उसी केस में कर सकते हो if it's a known student or a student from your university, right? And if you know that he has a LinkedIn profile, you have already spoken to him, he is in your program or your university, अगर वो बोल रहा है तो आप trust कर सकते हो. But Craigslist में कोई random person who has posted that this accommodation is available and he is asking you to make a deposit, do not trust on that. बहुत स्कैम्स होते हैं जहाँ पैसा ले लिया जाता है, पता चलता है वो एकोमोडेशन झूठी थी, वो लिस्टिंग फेक थी, राइट? So just be careful about these kind of scams which would happen. There's one more very important thing which you guys can do in case you have already exhausted all of these resources and still you are not finding accommodation. You can always contact Indian Student Association at university, right? Every university has Indian Student Association, right? Let's say you're going to Northeastern University, Boston. Just on Google type Northeastern University Indian Student Association. It will take you to the relevant link whereby the contact information of ISA would be given. Usually it acronym दिया होता है ISA करके, Indian Student Association. So it will take you to the contact details of ISA. Contact them, drop them an email that I'm so and so student who would be coming on so and so day. I'm finding it difficult to get accommodation. Can you guys help me with this? Right? A lot of Indian Student Association people are so helpful that they'll come to the airport and they'll pick you up. They'll get you settled in the accommodation also. ठीक है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में ये है. कुछ यूनिवर्सिटीज में अगर हमारे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं तो इनफैक्ट दे विल आल्सो बी एबल टू हेल्प यू विद दिस थिंग, राइट? I think some students have posted the queries. Astik, we can connect over the call to discuss this. How soon you can claim your insurance. Muskan, we have to show the lease papers while immigration or not? Not required actually, Muskan. ठीक है, आप बता सकते हो कि आप जाके कहाँ हो सकता है आपकी एयरबीएनबी बुकिंग्स हो फॉर 1 week, और मे बी यू आर गोइंग टू stay with your family or some friends who are already there. So you can just tell it to visa officer that for a week's time I would be staying with them and then I'll be looking for my accommodation over there. Okay, so there is no requirement of showing lease papers during the immigration. क्लियर है एकोमोडेशन पे? और कुछ क्वेश्चन है आप लोगों को तो मुझे बता दीजिए आप. तो suburban places usually the
rental expense would be about $250 to $300 in shared accommodation. If you're going to suburban universities, you'll roughly spend $250 to $300 per head. This doesn't include your utilities and all. Utilities extra. Utilities is your internet, electricity, all that would be extra. Students who are going to city-based universities, the metropolitan locations, over there, the expenses roughly would be $600 to $700 on rental, right? And additional utilities. Any questions on accommodation? So Nisha has a query. She's saying that an accommodation link was found in the university website. So university also has its own accommodation. University housing बोलते हैं उसको. Nisha, problem ये है कि university housing is usually expensive, right? So if you're finding that outside accommodation and university accommodation ज़्यादा difference नहीं है निशा, उस केस में आप उसको book कर सकते हो. Usually, university housing is more expensive because they are going to give you individual rooms. Infrastructure is better. There are a lot of facilities over there, because of which their housing is little expensive. Like in your university, what I remember is it's about $14,000 a year. Same thing if you're living outside in Amherst, it's going to be about 10K a year, 9 to 10K on rental every year. So just make sure that you're comparing these costs and expenses before booking it from the university website. Not required, Sanid. Bank balance till immigration set की जरूरत नहीं है. वीजा तक की जरूरत थी. So now with that amount, आप चाहें तो उसको withdraw कर सकते हैं, Sanid. Isha has a query. Will it be a problem if I don't have my accommodation figured out before my visa interview? No, Isha, not required. वीजा ऑफिसर कभी पूछते ही नहीं है स्टूडेंट से अकोमोडेशन वगैरह के लिए, वेयर एग्जैक्टली वुड बी लिविंग एंड ऑल. सो इट्स कंप्लीटली फाइन इफ यू डोंट हैव योर अकोमोडेशन before your interview. It's not going to be a problem. Mohit, apartment complex or private apartment owners, which is better? All these options are good, Mohit. Depends on the cost that you are going to bear for all of these things. ठीक है. Obviously private apartments ज़्यादा अच्छे होंगे लेकिन उनकी cost भी बहुत ऊपर जाएगी. So at the same time you'll have to watch your pocket also. Okay? How much money you're selling? Is it worth spending that amount of money? Sahil Sharma University is having an option for off-campus housing as well. You can look for it, Sahil. Again, compare the cost. Right? Moving ahead. So this is again one important concern which I think all of you guys had, how to look for GATARA. So GA is your graduate assistantship. Graduate assistantship is any on-campus jobs where you would assist professors with their day-to-day activities. ठीक है, जैसे grading करना, उनके exams जब चल रहे हैं तो उसमें as an invigilator खड़े हो जाना, right? So all of these activities are considered as graduate assistantship, whereby academically you are helping professor to conduct the classes, right? TA-ship and RA-ship are more course and research oriented. In teaching assistantship, you are going to assist professors to take his classes, right? Let's say your professor is taking computer programming 101 class for the undergrad student, right? As a teaching assistant, professor can ask you to take some preliminary classes for those students. ठीक है कि बहुत basic classes कई बार professor बोलते हैं हम नहीं लेंगे आप ले लो. So as a student you get this opportunity to teach it to other students. Usually those students are undergrad students. तो उनकी basic कुछ classes आपको लेने को दे दी जाती है. So TA-ship usually आपके knowledge पे मिलती है आपको, right? GA-ship overall personality, communication and these things पे मिलेगी. But TA-ship में वो आपका knowledge and presentation skills देखना चाहेंगे. So if your knowledge on the subject area is good and you can present it well, you can qualify for teaching assistantship. Coming to research assistantship, you're basically assisting a professor on his ongoing research work, right? So a lot of universities have this provision that if you qualify for these positions, they can waive your entire tuition money also. Like Utah State University is one of them. We had a student last year who has gone there, Karthik. So again, he qualified for teaching or research assistantship, because of which they did not charge him any money, right? Georgia Institute of Technology, GA Tech, also has a similar plan. If you qualify for TARA, they are not going to charge you any tuition, right? So ये बहुत से यूनिवर्सिटी में provision होता है. That's why taking up
स्पेशली TNRA, टीचिंग एंड रिसर्च असिस्टेंटशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर ये आपने पिक कर ली, यूजुअली फर्स्ट सेमेस्टर में क्रैक करना मुश्किल है, बट सेकेंड या थर्ड सेमेस्टर में आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल सकती है. बट वंस यू ग्रैब दिस, योर मनी would be waived off in majority of universities. And some universities, they do not waive the money, but they pay you well, and the pay is sufficient to take out the expenses. Usually, they'll pay you something like $2,000 or $2,500 a month to conduct that TNRA. This money is more than sufficient to cover your expenses, monthly expenses, right? So यहाँ पे अगर आप जाएंगे इस लिंक पे, ये प्रेजेंटेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगा. मैंने एक RATA प्रोफेसर्स को क्या भेजना होता है उसका एक सैंपल बना रखा है, विच यू गाइज हैव टू यूज एज अ रेफरेंस. साहिल, दिस इज वेरी एक्सपेंसिव, आई वुड से अवॉइड करूं. तुम्हारी यूनिवर्सिटी के अराउंड तुम्हें $500-600 पर मिल सकते हैं इन शेयर्ड एकोमोडेशन. So these are just sample emails of and reference emails which students have sent and passed to their professors. You can अब ये कुछ computer science से related होंगे, कुछ other field से related होंगे, but you'll get the gist of it that this is what needs to be communicated to the professors, right? So what needs to be done is just make list of professors who are teaching in your department, right? उनकी list बनाओ, उनके emails उनकी website पे आपको मिल जाएंगे, राइट. कई बार प्रोफेसर्स के ईमेल डायरेक्टरी या वेबसाइट पे मेंशन नहीं होते हैं, बट इफ यू नो देयर फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, जस्ट पुट दैट ऑन गूगल विद द नेम ऑफ यूनिवर्सिटी एंड राइट ईमेल एड्रेस, राइट. And you will get the links from some publications or some other websites where that professor's email ID is mentioned. ठीक है, तो एक बार आपको email IDs मिल गए, let's say you have got access to 12 professors email ID. उन सबको आप RATA शिप के लिए एक ईमेल भेज सकते हैं जिसमें आप अपनी प्रोफाइल बताएंगे, व्हाट यू हैव डन सो फार, हाउ यू वुड बी हेल्पफुल एज अ स्टूडेंट इन देयर रिसर्च वर्क और इन देयर टीचिंग वर्क, राइट, एंड व्हाई यू वुड बी इंटरेस्टेड इन असिस्टिंग देम. वो सब कंटेंट यहाँ पे एज अ रेफरेंस दिया हुआ है. कॉपी पेस्ट मत करिएगा. यू कैन यूज ChatGPT फॉर RATA emails. आप ChatGPT यूज करके इसको पैराफ्रेजिंग करके अपनी चीजें लिखवा सकते हैं. तो इसकी लिंक यहाँ पे पोस्टेड है. जस्ट यूज दिस, right? Start sending it to the professors from now on, right? Do not wait that once I'll enter the university and then only I'll be applying for these positions. कई बार ये positions open रहती है और यहीं से भी आपको मिल सकती है. Even before you land in US, you might have a Zoom interview with the professor with which he'll finalize you for one of these positions. So make sure you're visiting your program website, look at faculty directory or the professors who are going to teach you. उनकी एक लिस्ट आ जाएगी या उनके ईमेल्स आ जाएंगे अलग अलग. थोड़ा इसको आप कस्टमाइज करके भेजना. इट शुडंट लुक लाइक दैट यू हैव सेंट सेम काइंड ऑफ ईमेल टू एवरी प्रोफेसर. ठीक है, वो आपको समझ भी आ जाएगा. जैसे इसमें आप देखेंगे तो प्रोफेसर के बारे में भी कुछ कुछ लिखा होगा. जैसे यहाँ पे आई वॉज enthralled टू सी योर रिसर्च ऑन दीज एरियाज, तो वहाँ पे आप उसकी रिसर्च के बारे में बताओगे कि आपने क्या देखा है. आई ऑल्सो रेड फ्यू ऑफ योर जर्नल ब्लॉग्स अबाउट XYZ थिंग which has motivated me to apply for MS from your esteemed university, right? So these are places where you would personalize your email. Try to customize this email. It doesn't look like, it shouldn't look like that you have sent same email to all professors. So make sure that आप इसको personalize करके भेजें इतने पार्ट को. मेल्स जितने पर्सनलाइज्ड होते हैं उतने रिस्पॉन्स आने की प्रोबेबिलिटी हाई है. मेल्स का नेचर जितना जेनरिक दिखेगा उनको, उतना आपको उनको लगेगा ये स्पैम है बेसिकली. ये सेंड इट टू ऑल प्रोफेसर्स, ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन मी. इसको सिर्फ एक RATA शिप उठानी थी इसलिए इसने सबको मेल कर दिया है. सो मेक श्योर यू आर कस्टमाइजिंग ऑल दीज मेल्स एंड मेकिंग दैम पर्सनलाइज्ड. क्लियर है? सो दिस इज योर way to apply for RATA. Make list of professors from the university website, create an email using ChatGPT and start sending it to them. ठीक है, मेक श्योर आप उसमें हाईलाइट करेंगे आपकी क्या क्वालिटीज या रिसर्च वर्क है विच मेक्स यू सुटेबल फॉर दैट पोजीशन. विदाउट हाईलाइटिंग दैट आपको कभी कॉल या इंटरव्यू नहीं मिलेगा. ठीक है, इसके अलावा GATA के अलावा देयर आर सेवरल ऑन कैंपस जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल. Right? University itself is like a running organization, a company where they would always need more resources. ठीक है, स्टूडेंट्स इसलिए वो सीख करते हैं बिकॉज स्टूडेंट्स आर काइंड ऑफ रिसोर्सेज फॉर विच दे डोंट हैव टू पे देम
the same money which they'll be paying to a full-time employee, right? So university has a library, cafeteria, sports center, fitness center, many places where you can apply for jobs. So इसका एक बहुत मैं अच्छा आपको तरीका बता रहा हूँ which I employed in my time and I was successful right in my first first or second week I had a part-time job in my university. So what I did was that I took 15 or 20 copies of my resume. मैं इंडिया से ही मल्टीपल कॉपीज ले गया था अपने रेज्यूमे की सो दैट 15-20 कॉपीज ऑफ रेज्यूमे विच आई टुक आई वेंट टू एवरी डिपार्टमेंट इन माय यूनिवर्सिटी एंड उनके फ्रंट डेस्क पे बड़ी पोलाइटली मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करके आया एंड आई लेफ्ट माय रेज्यूमे दैट इफ देयर इज सम ओपन पोजीशन फॉर विच यू थिंक माय प्रोफाइल इज सूटेड प्लीज गिव मी अ कॉल और स्केड्यूल एन इंटरव्यू विद मी सो हर डिपार्टमेंट में जाके मैंने वो अपनी रेज्यूमे की कॉपी दे दी थी सो उसी में से एक डिपार्टमेंट में से मुझे कॉल आ गया इंटरव्यू हुआ एंड दे गेव मी द पार्ट टाइम जॉब सो मेक श्योर यू आर गोइंग विद दिस अप्रोच हैविंग मल्टीपल कॉपीज ऑफ रेज्यूमे विजिट दी विजिट ऑल डिपार्टमेंट्स ऑफ योर यूनिवर्सिटी अगर जीएटी या आरए नहीं मिल रही है तो आप कहीं और ट्राई कर लीजिए टू मीट योर एक्सपेंसेस ठीक है just keep this multiple copy of resume visit all of these departments drop your resume there politely tell them that I'm looking for some kind of on-campus job opportunity if there's something that suits my interest and profile if you think that I'll be well suited for that job please give me a call or let me know my number is mentioned on this coming to second most important concern, which is hunting for jobs in US. How does it take place and what is the process? So you all are already aware that US doesn't have this placement thing which we were following in India. There's no campus recruitment happening. There's no placement. So how do people or how do students in US find jobs? So many universities do conduct these job fairs. ठीक है रिक्रूटमेंट इवेंट्स तो नहीं करते हैं पर जॉब फेयर्स करते हैं बट जॉब फेयर्स आर मोर ऑफ हैंडशेक इवेंट्स where the companies are going to put their stalls. It's more of exhibition where multiple stalls would be placed. All companies would come. They'll capture a stall. You'll go to their stall. You'll introduce yourself that I am this, this, that. They'll tell about themselves, what position they are looking for, what this company is into, and all of those things. So it's more of exchange of information from both the parties, but it's not an interview process, right? आप उनको अपना resume वहां देकर आते हैं. If they liked your personality and the way you talked and your credentials on resume, which is mentioned on your resume, they'll give you a call for the interviews. Then multiple rounds of interviews would happen, right? So one way is job fairs, right? What are the other ways? We are going to talk about that. कि क्या तरीके होते हैं तो अभी सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट्स जॉब्स पिक कर पा रहे हैं दैट इज थ्रू लिंक्डइन राइट लिंक्डइन एंड वेरियस नेटवर्किंग एंड हैंडशेक इवेंट्स वहां से पिक कर पा रहे हैं इंटर्नशिप्स एज वेल एज पार्ट टाइम जॉब्स ऑल्सो सॉरी फुल टाइम जॉब्स राइट तो इसकी एक मैंने टाइमलाइन बना रखी है और कैसे उस पर काम करना है वो आप लोगों को फॉलो करना है ट्रस्ट मी इफ यू फॉलो दैट टाइमलाइन यू विल नेवर गो रॉन्ग विथ योर इंटर्नशिप्स मोस्ट स्टूडेंट्स द थिंग विच दे डू और ये हर साल करते हैं मेरे इतना बोलने और बताने के बाद भी करते हैं कि इंटर्नशिप का हंटिंग जो टाइम चालू होता है दैट एक्चुअली स्टार्ट्स फ्रॉम अगस्त which means just next to next month you will be starting with your internship hunting process right many students they just once they've reached US they want to enjoy the life and get comfortable with all of those things और वो करते करते एक सेमेस्टर कहाँ निकल जाता है पता ही नहीं चलता है and they start applying for internships in winter December and January right worst period to apply for internship the correct period and timeline to apply for your internships is actually the moment you land in US right अगस्त में आप जैसे ही अपनी यूनिवर्सिटी रीच कर गए हैं start building up your resume cover letter and LinkedIn profile start working on these things many of I've visited your LinkedIn profiles and I could see that profiles are not very much updated. You have not updated your certifications, your achievements, work experience. तो आपने जैसा resume में अच्छे से quantify और describe किया है, make sure you're putting all of those details on your LinkedIn profile also, right? So आपको resume, cover letter, LinkedIn profile जाते से ही काम करना चालू कर देना है अगस्त में, right? September month में you'll create database, a spreadsheet of all potential employers in your area जो internship देने में interested है. ठीक है? You can take help of your second year students or students who have graduated and ask them what kind of employers were interested or what kind of employers in past have given internships to international students
At the same time, every university has this career advisor as well as career help center. वो भी आपको इन चीजों के लिए गाइड करता है, तो आप उनसे भी पूछ सकते हैं. दे कैन गिव यू पोटेंशियल लिंक्स ऑफ पास्ट एम्प्लॉयर्स हु हैव टेकन स्टूडेंट्स फॉर द इंटर्नशिप्स. इन सबकी एक लिस्ट बनाइए, ऑनलाइन डेटाबेस से भी आप निकालिए लिस्ट, राइट. वंस यू हैव क्रिएटेड लिस्ट, आप सॉरी ये साइमल्टेनियसली उसके बाद आप गूगल करिए एंड क्रिएट लिस्ट ऑफ ऑल जॉब फेयर्स एंड नेटवर्किंग इवेंट्स व्हिच आर शेड्यूल्ड इन नेक्स्ट 3-4 months. Okay. On Google, just put what networking events are happening around you. Job fairs, you will get list of events which are happening. Google usually वहाँ list कर देता है जो जो networking events हो रहे हैं या कोई job fairs भी हो रहे हैं. So it will publish the list of those events. Make sure you're attending all of those events. In the month of October, look for the college alumni employer on LinkedIn. Try to find their email IDs and start spamming. By spamming, what I mean is that start sending resume and cover letters to them. Right? Cover letters are very important to US recruitment process. Cover letters are your mini SOP. SOP is very exhaustive where you talk about many things, right? Your family, your upbringing, culture, socio-economic aspects. But in cover letter, mainly you would talk about what makes you good for the profile that you're applying for. So there are more of these RATA emails only. ठीक है, इट्स जस्ट ये एकेडमिक सेंट्रिक है, वो जॉब सेंट्रिक हो जाएगा, जहाँ पे आप अपनी क्वालिटीज एंड पास्ट एक्सपीरियंस हाईलाइट करते हैं and you tell it to the prospective employer why he should be taking you, right? And why you are interested in taking up internship in his company. That is your cover letter. Right? Now, this thing is very important. You have to prepare a 2-minute pitch for the interviews. Any interview which would be conducted, a common question that would come is, tell me about yourself. This is one common question which most employers would ask you. You should always have this 2 minutes pitch ready where you can introduce yourself, what you have done, and why you would be an ideal fit for that job. ये आप explain करना आना चाहिए. तो एक आपकी story ready होनी चाहिए 2 minutes की. So make sure you're writing your 2 minutes pitch somewhere, right? You can take help of ChatGPT also. Put your credentials over there and ask ChatGPT to create a 2 minutes pitch for networking event, right? बहुत अच्छे से फ्रेजिंग करके आपको चैट जीपीटी एक पेज दे सकता है विच यू कैन यूज फॉर योर नेटवर्किंग इवेंट्स, विच यू कैन यूज फॉर योर इंटरव्यूज. व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज दैट यू हैव टू लीव अ लास्टिंग इंप्रेशन ऑफ द पर्सन यू मेट. ठीक है, आज का एजेंडा वो भी है बात करने का कि वो कैसे किया जाता है. Then start doing mock sessions with your friends or do a self recording for interviews. Start practicing, do mock sessions either with your friends or you can visit your career center of the university and ask your advisors to conduct these mock interview sessions. They also help in that. हर यूनिवर्सिटी का एक career center है जहाँ पे there is a guide or advisor who is going to help you with this process. So you just have to tell him that I have landed my interview call from so and so place and I would like to prepare for my interview and this person is going to help you with the interview preparation. November and December, start giving internship interviews of the shortlisted companies. Go for interviews if you are not interested in profiles just for the sake of experience. So many a times you might have applied for some position. Now you're not so much interested in that, right? Or maybe you think that the kind of job profile they're offering, I'm not interested in that. Still for the interview, for the sake of practicing your interview, go for that place. ठीक है, आप उस पोजीशन के लिए फिर भी जाइए. ये मेरा ऑनेस्ट एडवाइस है. आप भले ही इंटरेस्टेड नहीं भी हैं उस पोजीशन के लिए, स्टिल जस्ट टू हैव दिस इंटरव्यू प्रैक्टिस वेयर दे विल आस्क यू फ्यू थिंग्स एंड यू टेल अबाउट योरसेल्फ. सी दिस एज वन another mock session which is happening, another practice session which is happening, और आप उस नजर से ही उस इंटरव्यू को फेस करने चले गए. ठीक है, go through the company websites and you can apply from their career section also. Most companies have this career section where they have listed internship and full-time jobs. Over there also you can go and apply for these internships. Right? Any questions on this? So बच्चे देखो गलती ये करते हैं कि नवंबर दिसंबर से वो अपना ये चालू करेंगे. यूएस इज अ प्लेस वेयर फॉर एवरीथिंग देयर इज अर्ली मूवर एडवांटेज. जैसा मैंने आपको बताया कि GATA के लिए आप अभी से चालू हो जाइए. Most students once they have landed in US and they'll start their classes, then they'll start for GATA. आप अभी से चालू कर दीजिए. Maybe your professors would not reply to you, but they'll remember that so and so student contacted me over the email. So they'll keep you as one of their priorities when they are looking for these RATA interns. ठीक है, same goes for your internship also. If you start early, trust me, by December you will have internship in your hand.
आप जाते से लेट बैक हो गए कि अभी तो यूएस आ गए हैं, थोड़े मजे मार लेते हैं, घूम लेते हैं, राइट, और गेटिंग एब्जॉर्ब्ड इन दैट, आप देखेंगे टाइम कहाँ निकल गया आपको पता ही नहीं चला। बाय दिसंबर आपको स्ट्रक होगा कि अब मुझे इंटर्नशिप्स देखनी है। उस टाइम तक बहुत सारे इंटर्नशिप्स जा चुकी होंगी। ठीक है, स्पेशली कंपनीज लाइक जेपी मॉर्गन एंड बिग इन्वेस्टमेंट बैंक्स, दे यूजुअली क्लोज देयर इंटर्नशिप डेडलाइन बाय दिसंबर। ठीक है, तो आप उस टाइम अगर चालू कर रहे हैं तो आप बहुत गलत कर रहे हैं। यू हैव टू स्टार्ट द मोमेंट यू रीच योर कैंपस। सो अगस्त इज द टाइम टू स्टार्ट applying for these things. Nimisha, when can we start applying for internship? August, September, sorry. September, October are the months when you should start applying. August is your planning period, right? Creating database, resume, cover letter, all of these things, Nimisha. And once you have all your material ready, you have database of prospective employers, you should start emailing them. So use entire September and October in applying for internships. Clear, Nimisha? Coming to our next, getting final jobs, applying for OPTs, and how to find OPTs. So optional practical training period. So all of you guys are going to STEM affiliated program, right? If your program is STEM affiliated, US government is going to give you 1 + 2 years of OPT. 1 year is given to all students irrespective of their STEM and non-STEM recognition, right? 2 years extended period is given to students who are going to STEM affiliated programs, which makes it 3 years of OPT period. Now, optional practical training period is more like a full-time job only. It's just that you are working with a company on student visa, not on work visa. H1B पे आप काम नहीं कर रहे होते, आप student visa पे काम कर रहे होते हैं OPT में, but it is same as your full-time job. The role is full-time, the pay is full-time, the responsibilities and challenges that you would face, everything is full-time. It's just the term that they use is optional practical training period. In this duration you are not required to have work visa, right? 3 years में अगर आपके पास work visa नहीं भी है तो आप 3 साल तक तो काम कर सकते हैं. Beyond 3 years, if you would like to extend, then you need to have H1B, which is your work visa, right? So a lot of employers, they start pretty early. फर्स्ट ईयर से ही आपके H1B के लिए अप्लाई करने लगते हैं. अभी आप लोग जा रहे हैं 24 में, सो मोस्ट ऑफ यू वुड बी ग्रेजुएटिंग इन द ईयर 26, राइट? सो 3 years of OPT would make it 29. Till 29 you can work without H1B, right? But एक चीज कंसिडरेशन स्ट्रांगली करिएगा कि यूएस का जॉब एंड H1B process is still luck based, right? It's a gamble, it's a luck, whereby a lottery is going to decide whether you would be picked for your jobs or not. It's not your qualification, it's not your university, it's not what kind of university you guys have graduated, but it's going to be luck based. Make sure that you're joining employers who are going to sponsor you right from the first year of your OPT. So in that way, you're getting 3 chances to get into the lottery. ठीक है, लॉटरी में उनके पास एक सीमित कैप है विच इज 85,000 स्टूडेंट्स और कैंडिडेट्स दे वुड बी सिलेक्टिंग एवरी ईयर आउट ऑफ ऑल द एप्लीकेंट्स. सिर्फ 85,000 का ही कैप रखा है उन्होंने, इतने लोगों को वर्क वीजा मिलता है H1B हर साल, राइट? द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स आर यूजुअली 4 or 5 times more than this. So make sure you're asking your employers that right from the first year, they are going to file your H1B, so that maybe first time if you're not lucky, second and third time, you guys can get your H1B, right? So how to find OPT jobs? Getting OPT from your internship company is easy. If you have worked with some company as an intern, you can always ask them that I'm interested in full-time role. So usually getting an OPT letter from that company is relatively easy. But let's say in case you guys have not been successful in getting OPT letters, you have applied to multiple companies, you have graduated. After graduation, you're going to get 90 days window to look for jobs. So 90 days is your period in which if you do not have OPT letter, you'll have to go back to your country, right? So 90 days वैसे बहुत sufficient होते हैं. In case your interviews are not getting materialized, you're not getting offers or OPT from these companies that you have applied to, I can share some general hacks which you can do. Most of the universities now have created a system where they can offer you OPT for any university related job. ठीक है, जैसे I remember I had a student Jay Patel who graduated from Duke University engineering management program, and unfortunately he was not able to find job when he graduated. So during 90 days window when he was not getting any OPT,
he reached out to his university and asked that is there a way I can get OPT letter from university. So university had a non-profit center. Duke had a non-profit center जो non-profit activities में engaged होता था. So Duke University issued one OPT letter from that non-profit center that we have recruited Jay Patel for some voluntary work. ठीक है, इट्स अनपेड ओपीटी बट है उसके पास. तो वो जो 90 डे का क्लॉक है वो उसका रुक गया. ठीक है, लॉट ऑफ स्टूडेंट्स दे स्टार्ट पैनिकिंग दैट 90 डे बहुत कम है. इन 90 days if we are not able to find a job, then what would happen? But this OPT is a very easy thing, can be sorted. In case you guys are finding it difficult to get these OPTs, you can always reach out to us also. We have contacts of recruiters who can help you in issuing the OPT letters. ठीक है, तो ये प्रोसेस इतना डिफिकल्ट नहीं है कि ओपीटी के लिए कभी आप लोगों को पैनिक करने की जरूरत नहीं. Sahil has a query. At the present time, companies aren't providing this, even though you have done internship with them. Then what should we do? So I think I've already covered it, Sahil. Rishita, apologies, I joined late. Could you let me know when can we apply for internship in 24 hours? Do we have to wait? So Rishita, the recording of this entire session is going to be there in the group once we are done, once I've concluded. So you can go to that part where we were discussing internships. So very elaborately, I've discussed the timeline. वेल स्ट्रक्चर्ड एक टाइमलाइन है जो आप लोगों को फॉलो करना है, दिस वन, राइट. सो आप एक बार वापस देख लेना उस वेबिनार के रिकॉर्डिंग को एंड यू विल गेट टू नो व्हेन टू स्टॉप. Mohit, definitely. If you do not have research papers, it's difficult to crack the research assistant positions. You need to have some research credentials in order to apply for RA jobs. For teaching assistant, also you should have good knowledge of whatever classes you would like to take. Let's say you're going to take statistics classes for the undergrad students. तो आपके भी statistics के concepts अच्छे होने चाहिए. Make sure you're doing your homework and preparing well before applying for these TA jobs because the professor might ask you these things. He'll do a knowledge check before giving you class क्योंकि वो एक अपनी responsibility दे रहा है पढ़ाने की आपको. So he would like to see whether you are knowledgeable enough to take these classes or not. Right? So for TA-ship, knowledge is important. For research assistantship, research credentials are important. नेटवर्किंग पे आ जाते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है यूएस लाइफ का. सो व्हाई नेटवर्किंग इज इंपॉर्टेंट? 80% ऑफ दी स्टूडेंट्स दे एक्चुअली गेट देयर जॉब्स फ्रॉम नेटवर्किंग. सो नेटवर्किंग हैपेंस ऑफलाइन as well as online. Offline is through networking events, job fairs, random events, right? Social and club events are also there. वहां से भी आपको लिंक्स मिलती है. और ऑनलाइन इज योर लिंक्डइन. So most students today are getting their jobs through referrals. So referrals are coming through that network, right? कि आप कोई networking event में गए और वहां पे आपको कोई पहचान वाला मिल गया या नहीं भी मिला, you spoke to some random person and he is sitting at good position in a company, he might ask you to come for the interview or he might refer you to some other company also to face the interview. So many students have successfully found their jobs through these networking events. So ये casual events भी हो सकते हैं, formal events भी हो सकते हैं, लेकिन मिलती है. So networking is very important. So how to attend these networking events? Again, Google is your best friend in this regard. Go and type on Google. Let's say you're going for data analytics course or business analytics course. So just type business analytics networking events happening in New York City or whatever place you are. Just type that and see if there are networking events coming, right? Job events coming, internship events coming, and it will show you all the places where these events are being conducted with date and time, right? So आप उनकी लिस्ट बना के रखिए. कई बार इवेंट्स हो सकते हैं जो पढ़ाई और जॉब से रिलेटेड नहीं हो, बट इट कुड बी सम इंटरेस्ट बेस्ड इवेंट्स, राइट? स्किल बेस्ड हो सकते हैं या कोई आपके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी से हो सकते हैं. कोई मैराथन इवेंट हो सकता है, कोई भी अलग टाइप का इवेंट हो सकता है. फोटोग्राफी नेटवर्किंग इवेंट इज हैपनिंग, right? So if you're interested in that kind of activity, make sure you're joining some of these interest-driven groups also. ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई और जॉब वाले इवेंट्स को ही जाना है हमें. कोई अगर आप किसी चीज में इंटरेस्ट रखते हैं, so make sure, because I remember I used to play snooker, so I joined in New York one of the networking events whereby all snooker players and these people were coming. I got a very good lead, although that interview did not materialize, but this person helped me get one interview.
in one of these networking events. So again, as I said, that this could be a casual event, but आप जाओगे वहां पे तो आपको हो सकता है ऐसे लोग मिल जाए जिनके थ्रू कोई लिंक और कनेक्शंस क्रिएट हो जाए. So make sure you're attending all of these networking events. Then this is again very important. Your resumes have to be ATS friendly. So because employers are inundated with so many applications, it's practically impossible for them to open every application and see your credentials to shortlist you. Most companies nowadays in US are using tracking system. It's a software through which they are able to filter your resume, whether it is suiting this job or not. ठीक है. अब आपका रेज्यूमे उस जॉब के लिए एटीएस फ्रेंडली है कि नहीं, उसको आप इस वेबसाइट पे जाके स्कैन कर सकते हैं एंड गेट अ असेसमेंट. ठीक है. बहुत थरो असेसमेंट के लिए आई थिंक दिस वेबसाइट वुड चार्ज मनी, बट स्टिल इट्स वर्थ इट. सो इवन इफ इट्स आस्किंग मनी, यू कैन पे सम अमाउंट टू गेट योर रेज्यूमे रिव्यू वेदर इट इज एटीएस फ्रेंडली और नॉट. कई बार कैंडिडेट्स की स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल होने के बाद भी सब कुछ अच्छा किया हुआ है, जस्ट बिकॉज देयर रेज्यूमे इज नॉट एटीएस फ्रेंडली, they are not getting interview invites, right? So make sure ATS is basically जहाँ पे वो देखते हैं कि वो स्किल सही मेंशन है कि नहीं, आपकी रेज्यूमे की फॉर्मेटिंग और उसका लुक सही है कि नहीं, ये सब ATS चेक करता है आपका. ठीक है. So sometimes the information is not organized correctly. Sometimes you have not mentioned the impact that you have left in the organization. You have not quantified your achievements. These are few things which ATS is going to check. तो keywords which are matching with the job role वो भी देखा जाएगा. तो मेक श्योर कि आपका रेज्यूमे एटीएस फ्रेंडली हो, वो आप यहाँ पे लिंक पे जाके चेक कर सकते हैं. क्वांटिफाई करिए अपने रेज्यूमे पे जितना पॉसिबल हो, आपके जो अचीवमेंट्स है पास्ट के उनको जितना पॉसिबल हो क्वांटिफाई करिए. यू हैव वर्कड एज अ कोडर, आपके कोडिंग करने से कोई सिस्टम या प्रोसेस फास्ट हुआ है या रिसोर्सेज बचे हैं या पैसा बचा है, तो आप उसको मेंशन करिए दैट आई मेड दिस प्रोसेस 20% फास्टर. आई सेव्ड 6 man resources or 6 man hours which were going for this particular task by automating a process. So आप जितना क्वांटिफाई करेंगे अपने रेज्यूमे को उतना अच्छा है. फॉर एनी जॉब्स विच यू आर गोइंग, मेक श्योर दैट आप क्वांटिफाई करिए. आपका यूनिवर्सिटी का जो करियर एडवाइजर है वो भी आपको ये चीज बताएगा. You should always keep versions of your resume depending on the job posting, right? कि let's say you're applying for a job where they are looking for people who have worked on Power BI, right? So आपको Power BI फोकस करके अपने resume को ज्यादा बनाना पड़ेगा. In another job, it's not about Power BI, it's about Tableau, right? So you'll have to focus more on the keywords where you're talking about Tableau. So you'll have to keep multiple versions of your resume depending upon the jobs that you're applying for. In our days, when we were applying, we used to keep 4 resume versions ready for the kind of jobs that we are applying. तो ब्रॉडली हम लोगों ने देख लिया था कि किस किस तरह की जॉब्स हैं जो हमें अप्लाई करनी है, एंड अकॉर्डिंगली वी क्रिएटेड 4 versions ऑफ आवर रेज्यूमे. सो वी स्टार्टेड ट्वीकिंग कीवर्ड्स टू मैच द जॉब प्रोफाइल. दिस इज हाउ in those days ATS was not being used, but still ATS यही चीज स्कैन करता है कि जो जॉब लिस्टेड है उसके हिसाब से आपका स्किल्स, एक्सपीरियंस, ये सारी चीजें मैच कर रही हैं. द कीवर्ड्स दैट यू हैव यूज्ड आर दोस मैचिंग विद द जॉब रोल. इफ इट्स नॉट मैचिंग, ऑटोमेटिकली वो आपके रिज्यूमे को डिस्क्वालीफाई कर देता है. कई बार फॉर्मेटिंग इश्यूज के कारण भी कर देता है. फॉर्मेटिंग एज एन आपके अलाइनमेंट रिज्यूमे के अच्छे नहीं है, आपकी हेडिंग और डिस्क्रिप्शन आपने मिस अलाइन कर रखे हैं. So because of look of your resume, formatting of your resume also, it might get rejected. That's why make sure कि आप ATS पे review करें अपने resume. Now this is the most important thing which I wanted to discuss. Many of us lack the skill of small talks, right? Small talks होता है जो US के culture में बड़ा deeply imbibed है, and especially in job interviews, they are going to check you with the skill small talks. You might be knowing that most companies are going to conduct 6, 7 rounds of interviews, right? In US, it's pretty usual that most companies, you're facing your job interview with Google, Facebook, any of big companies. This is usual thing कि आपको 6 to 7 rounds of interviews के लिए बुलाया जाता है, right? So first few rounds are usually technical. फर्स्ट राउंड में वो आपका नॉलेज चेक, आपको कोडिंग आती है कि नहीं, या आप जिस भी कोर्स जॉब के लिए जाना चाह रहे हैं उसका टेक्निकल नो हाउ कितना है, वो आपके फर्स्ट 2 राउंड्स यूजुअली डिसाइड कर देते हैं. दी सब्सिक्वेंट राउंड्स आर एक्चुअली अबाउट सीइंग योर फिट कल्चरली. आर यू फिट टू वर्क इन दिस कंपनी, राइट? दैट थिंग दे वांट टू सी. आप किसी टीम में काम करेंगे जिसमें 6 लोग ऑलरेडी हैं, तो वो 6 लोग सब आपको इंटरव्यू कर रहे हैं टू सी इफ आई एम वर्किंग विद साहिल एंटायर डे, will it be fun to work with this guy,
राइट, हाउ रिसेप्टिव ही इज, ये काम में कैसा रहेगा, ये टीम में जेलअप होगा कि नहीं, ये सब वो देखना चाहते हैं. एंड दैट्स व्हाई स्मॉल टॉक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. स्मॉल टॉक्स आर जो बिना काम के भी बात हो सकती हैं, वो टॉक्स होती हैं. अब इसमें एज इंडियंस अ लॉट ऑफ अस हैव दिस प्रॉब्लम दैट कोई काम की बात होगी तो हम कर लेंगे किसी अनजाने आदमी से, स्ट्रेंजर से, राइट. बट इफ देयर इज समथिंग जो हमारे कोई काम की नहीं है, तो हम किसी स्ट्रेंजर से कनेक्ट नहीं करते, बात नहीं करते हैं, राइट. सो स्मॉल टॉक्स इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट रैंडम थिंग्स व्हिच आर गोइंग अराउंड. इट कुड बी वेदर, इट कुड बी मूवीज, इट कुड बी स्पोर्ट्स, राइट. सो ब्रेकिंग दैट आइस, दैट इज important. सो स्मॉल टॉक्स करना बहुत जरूरी है यूएस के कल्चर में, right? So these are informal dialogues that serves as social lubricant and professional and personal interactions. So small talk is important in interviews for building rapport, right? Research indicates that interviews often make crucial hiring decisions within the first few minutes of interaction based on the comfort and rapport that the candidate is reflecting. They also assess the cultural fit with these small talks. According to the study by the Society for Human Resource Management, candidates who adaptively engage in small talks show higher adaptability to company culture. Displaying communication skills, effective small talks showcase one's ability to initiate and navigate conversations, a skill highly valued across job roles. Right? So स्मॉल टॉक्स का बहुत इंपॉर्टेंस है जो हम लोग नहीं देखते और नहीं करते हैं, पर इनको डेवलप किया जा सकता है. इवन इफ यू वर शाय, इंट्रोवर्ट, इनहिबिटेड सो फार, स्टिल यू हैव टाइम टू वर्क ऑन दीज स्किल्स. कैसे कर सकते हैं? सो डेवलपिंग स्किल्स इन स्मॉल टॉक, ऑब्जर्वेशन करना चालू करिए. स्टार्ट विद कॉन्टेक्चुअली रेलिवेंट टॉपिक्स सच एज वेदर, कम्यूटिंग, न्यूज रेलिवेंट टू द इंडस्ट्री. और यू कैन एम्प्लॉय फोर्ड मेथड. ये यूएस में बड़ी पॉपुलर मेथड है स्मॉल टॉक्स करने की, जिसमें आप फोर्ड मेथड को ट्राई करिए, जिसमें यू कैन पिक अप सम कॉमन टॉपिक्स with a stranger, with a new person. Let's say you have gone for the interview. अब उस इंटरव्यू से डायरेक्टली इंटरव्यू नहीं चालू हो जाता है, तो उसमें स्मॉल टॉक्स भी इन्वॉल्व हो जाती है कई बार. तो यू कैन टॉक अबाउट सम कॉमन पॉइंट्स ऑफ फैमिली, कॉमन ऑक्यूपेशन, रिक्रिएशन, ड्रीम्स, राइट. सो वी शुड एक्सप्लोर सम ब्रॉड नॉन कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स. ठीक है, कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स पे बात नहीं करनी चाहिए, जैसे रिलीजन एंड पॉलिटिक्स आर सेंसिटिव टॉपिक्स. सो यू गाइस कैन हैव अ वेरी डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू with the person जिससे आप बात कर रहे हैं. So usually politics, maybe you are right winger and that guy is a left winger, right? So कभी भी politics और religion को लेके नहीं डिस्कस करना चाहिए अपने को. इसके अलावा बाकी चीजों पे small talks करना बहुत जरूरी है. So active engagement techniques from cognitive behavioral therapy suggest mirroring body language and showing genuine interest to enhance rapport. Right? This is how आप small talk पे कर सकते हैं. Practicing would make you perfect. I've also recommended some list of books over here. ठीक है, जिससे आप अपनी स्मॉल टॉक एबिलिटी डेवलप कर सकते हैं. फाइन आर्ट ऑफ स्मॉल टॉक, हाउ टू टॉक टू एनीवन, टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स, effortless small talk, making conversation, the art of witty banter. So you don't have to exhaust all of these books. Just pick at least 2 or 3 books from here, जिसको आप पढ़ना चालू करें. इसमें से एक बुक है जो हम लोग आपको देते भी हैं. बिफोर यू गाइस गो फॉर योर रिस्पेक्टिव डेस्टिनेशन, वी गिव यू एज अ टोकन ऑफ फेयरवेल. सो ये सब बुक्स बड़ी सेल्फ हेल्प की, और वहाँ पे इंटरव्यूज में बहुत चेक होता है. इनफैक्ट 60-70% ऑफ द टाइम्स व्हेन स्टूडेंट्स आर रिजेक्टेड इन इंटरव्यू, इट्स एक्चुअली बिकॉज ऑफ स्मॉल टॉक्स. Maybe by knowledge they were strong, technically they were pretty strong, they had all impressive credentials, but on the interview table they were lacking these small talk skills, right? तो ये small talk आपको सीखना, बोलना चालू करना पड़ेगा. रैंडम लोगों से रैंडम चीजों पे बात करना. ठीक है, रैंडम तो नहीं, कुछ कॉमन बातें, कल्चर, मूवीज, स्पोर्ट्स, वेदर, इन सब पे बात करना सीखना पड़ेगा. Now, there are some frequently asked queries by some of these students, which airline to book. So, in this regard, what I would say is that you can also get in touch with Raghav. He's also taking care of airline booking and all. So, अगर कोई problem है तो वो आपको assist कर सकता है इस चीज में. Usually, Lufthansa एक airline है जो सोच समझ के आप लोग करना book, because Lufthansa has a issue whereby they ask you to have transit visa, right? Most of their routes and airlines would ask you to have a transit visa. अब जर्मनी का ट्रांजिट वीजा अप्लाई करना is applying for Schengen visa, which again is a time taking process. Unnecessary, it will require a lot of time, and you will also be spending money to get transit visa, right? So avoid flights जहाँ पे transit visa के requirements है.
आप उसके लिए एयरलाइन को डायरेक्टली कॉल करके पूछिए, या बुकिंग वेबसाइट जिस भी आप मेक माई ट्रिप या गो आई बी गो वॉट एवर वेबसाइट्स यू आर यूजिंग, just make sure you're calling them to check if this airline or this route which I am taking, would this be asking for a transit visa. Transit visa बिल्कुल अवॉइड करिएगा, ठीक है। कोई भी एयरलाइन, कई बार क्या होता है ट्रांजिट वीजा इज रिक्वायर्ड बिकॉज आपका ले ओवर टाइम बहुत ज्यादा है, 20 आवर्स प्लस का ले ओवर है आपका किसी एयरपोर्ट पे, राइट, विच आई यूजुअली डू नॉट रिकमेंड, 20 घंटे बहुत हो जाते हैं ले ओवर में। लेकिन अगर है तो आप मेक श्योर कर लीजिए कि उसमें ट्रांजिट वीजा रिक्वायर्ड है कि नहीं, क्योंकि कुछ एयरपोर्ट्स और कंट्रीज की पॉलिसी होती है दैट इफ ले ओवर टाइम इज सो एंड सो, if it is exceeding 15 hours or 20 hours, in that case they might ask you to have a transit visa, राइट। सो ये जरूर आप एयरलाइन बुक करते टाइम देख लीजिएगा। व्हाट शुड आई कंसिडर व्हाइल बुकिंग, सो मेक श्योर दैट यू आर अबाइडिंग बाय द baggage limit in terms of measurements, also the weight of the bags, वो सब आप अवॉइड करके चलिएगा, unnecessary you'll invite more expenses, right? And if you're planning to fly from, most of you are from Indore, so this is one advice I would like to give, that if you're planning to fly directly from Indore to, let's say your flight is till New York, कभी भी दो अलग अलग पीएनआर बुकिंग मत करिएगा, ठीक है। बहुत लोगों ने गलती करी है कि इंदौर से मुंबई डोमेस्टिक फ्लाइट अलग बुक कर ली और मुंबई टू न्यूयॉर्क की फ्लाइट अलग बुक कर ली है। इन दैट केस व्हाट वुड हैपन इज दैट व्हेन यू आर टेकिंग योर डोमेस्टिक फ्लाइट फ्रॉम इंदौर टू मुंबई, दे विल नॉट अलाउ योर इंटरनेशनल लगेज एंड दे विल पुट गुड हैवी अमाउंट ऑन दैट एक्स्ट्रा लगेज, राइट, जो कि अच्छा खासा हो जाएगा, वो शायद टिकट की प्राइस बराबर भी हो सकता है। सो मेक श्योर योर बुकिंग इन सिंगल पीएनआर। सिंगल पीएनआर होता है, अपना ओरिजिन इंदौर रखिए, डेस्टिनेशन न्यूयॉर्क रखिए, दिस इज कॉल्ड सिंगल पीएनआर बुकिंग। इन दैट द डोमेस्टिक एयरलाइन वुड अकोमोडेट यू इफ यू हैव डन योर टिकट्स इन सिंगल पीएनआर, दे विल चेक इट एंड उसके बाद वो आपको डोमेस्टिक में अलाउ कर देंगे इंटरनेशनल लगेज ले जाना, ठीक है। ट्रेवल इंश्योरेंस इज रिक्वायर्ड फॉर योर ट्रैवल, बैगेज लॉस ना हो जाए। और अगर आपने इंश्योरेंस बाय नहीं किया है तो एज आई कोटेड द एग्जांपल ऑफ वन ऑफ माय जूनियर स्टूडेंट्स who met with that unfortunate accident in first few days only. So make sure कि आप एक ट्रैवल इंश्योरेंस लेके जाएं कि फर्स्ट फ्यू डेज में जब आपके पास यूनिवर्सिटी का इंश्योरेंस नहीं आपने बाय किया होता है या आउटसाइड इंश्योरेंस नहीं लिया है, सो एटलीस्ट यू आर कवर्ड बाय सम इंश्योरेंस। दीज ट्रैवल इंश्योरेंस आर नॉट वेरी एक्सपेंसिव, आई थिंक 2000-2500 में आपका इंश्योरेंस कवर हो जाएगा फॉर अ मंथ टाइम, 1 मंथ के लिए, ठीक है। तो आप 1 मंथ का एक ट्रैवल इंश्योरेंस ले लें किसी भी कंपनी का। फॉरेक्स कार्ड रख लेना चाहिए, मल्टीपल एडवांटेजेस हैं फॉरेक्स कार्ड रखने के। सो फॉरेक्स कार्ड, बट यू डोंट हैव टू पुट अ वेरी बिग अमाउंट इन योर फॉरेक्स कार्ड्स, यूजुअली व्हाट वी रिकमेंड इज $1,500 to $2,000, इतना अमाउंट आप फॉरेक्स कार्ड में रख लीजिए। सो फॉरेक्स आपकी इमरजेंसी यूसेज के लिए बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। यू माइट बी कैरिंग योर डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड्स और मे बी सम कैश, बट एट टाइम्स आई हैव सीन दैट स्टूडेंट्स दे फेस प्रॉब्लम्स एट द एयरपोर्ट्स, कुछ परचेज करना है या एयरपोर्ट पे कुछ खरीदा, या कुछ खाने का लिया तो उनका क्रेडिट कार्ड स्वाइप नहीं हो रहा है या डेबिट कार्ड में प्रॉब्लम्स आ रही है। सो फॉरेक्स कार्ड यूजुअली हैज दिस रिलायबिलिटी दैट इन एनी प्लेस इट्स गोइंग टू वर्क। सेकेंड थिंग, मेनी ऑफ दीज फॉरेक्स कार्ड्स विल गिव यू लाउंज एक्सेस ऑल्सो, राइट। सो स्पेशली अगर आपके कम्यूटिंग टाइम और ले ओवर टाइम बहुत ज्यादा है और आपको एयरपोर्ट पे रेस्ट करना है, सो फॉरेक्स कार्ड्स में कई बार आपको लाउंज एक्सेस होता है, नॉर्मल क्लास एज वेल एज बिजनेस क्लास ऑल्सो इन सम ऑफ द फॉरेक्स कार्ड्स, राइट। So again, Raghav is more informed about these forex cards, which one to use. So you can contact him for ticket booking as well as forex cards. He'll guide you for this. आप उससे एक बार बात कर लीजिएगा अगर आपको forex card required है. So Raghav can help you with this process. अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये भी क्वेरी है कि मनी कैसे ट्रांसफर करना है, ठीक है। आप में से कुछ लोगों ने तो एजुकेशन लोन लिया हुआ है, कुछ लोग खुद से भी ट्रांसफर करना चाह रहे होंगे। सो इसके दो तरीके होते हैं, एक तो होता है बैंक टू बैंक ट्रांसफर कर देना। बैंक टू बैंक ट्रांसफर इज, let's say you have 20 lakh rupees in your State Bank of India and you would like to transfer that money to either university account to your or maybe your US account, कि US में आपका अकाउंट खुल चुका है वहां आपको करवाना है, तो आप बैंक टू बैंक ट्रांजेक्शन्स भी करवा सकते हैं। बट बैंक टू बैंक ट्रांजेक्शन्स आर यूजुअली वेरी टीडियस, रिक्वायर्स लॉट ऑफ पेपर वर्क, राइट, एंड टाइम भी बहुत खिंचता है। तो अगेन उसके लिए भी आप राघव से रीच कर सकते हैं, राघव कैन हेल्प यू विद दिस फॉरेक्स ट्रांसफर ऑफ मनी ऑल्सो। तो आप उससे बात कर लीजिएगा, तो आप वो कर सकते हैं, आप खुद से भी मैनेज कर सकते हैं। आप अपनी बैंक को, आपको कुछ राउटिंग नंबर्स और कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है, अगर आपकी बैंक का प्रोसेस स्मूथ है तो आप बैंक से ही करवा लीजिए। इन केस यू आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट, यू कैन रीच आउट टू दिस गाय एंड ही कैन हेल्प यू विद द फॉरेक्स मनी ट्रांसफर ऑल्सो टू यूएस अकाउंट। Sometimes banks do not agree
कि हम आपके अकाउंट में क्यों ट्रांसफर करें, अगर ये यूनिवर्सिटी की फी है तो हम यूनिवर्सिटी के अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, राइट। तो उस केस में भी देर आर वेज विच वी कैन हेल्प यू विद, कि यूनिवर्सिटी के अकाउंट में डाल के आप अपना पैसा कैसे निकाल सकते हैं, उसके भी तरीके होते हैं। कि आपने तो दोनों चीज फैक्टर करी होगी, कि ट्यूशन एज वेल एज लिविंग कॉस्ट। अब आपका बैंक मान ही नहीं रहा है, वो कह रहा है कि हम तो सीधे यूनिवर्सिटी के अकाउंट में पैसा डालेंगे। तो फिर उसके तरीके हैं कि ठीक है, आप यूनिवर्सिटी के अकाउंट में डलवा लो, हम यूनिवर्सिटी से विड्रॉ करवा सकते हैं अपना लिविंग एक्सपेंस का खर्चा, राइट। सो देयर आर वेज जो हम आपको बाद में बता देंगे। कैश मोस्टली $500 to $700 कैश इज फाइन, इससे ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है। $5 और $10 के कुछ छोटे करेंसी भी आप रख लीजिएगा कैश में, बट मोस्टली आई थिंक $500 700 कैश इज फाइन, राइट। सो इन फॉरेक्स कीप $1,500 to $2,000 and cash $500 to $700. This kind of money you can carry, and rest all your cards and everything would work. The moment you land in US, it takes about half an hour to open the bank account. You visit any bank, any branch, uh, half an hour में आपका अकाउंट ओपन हो जाता है। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है, एक बार आपका अकाउंट ओपन हो गया तो आप अपने इंडिया के अकाउंट से या जो आपने लोन लिया है उसको आप वहां पे ट्रांसफर करवा सकते हैं। क्लियर है? These are few things I wanted to discuss, the do's and don't of US life for especially students who are vegetarian, right? So the general term that we use in India for any outlet or restaurant that we go is this vegetarian, right? This is one term these guys are not familiar with. ठीक है, वेजिटेरियन उनके लिए होता है कि इसमें वेजिटेबल्स हैं कि नहीं है, तो वो हाँ बोल देंगे। ठीक है, सो इवन इफ इट्स अ चिकन सैलड which has vegetables, they'll assume that you're asking if it has vegetables or not, right? So never ask food is veg or not. Say, uh, is it having meat or no meat? The standard term that they use is no meat. So if you're a vegetarian who's looking for no meat option, right? Vegetarian option. So the term that you should be using is no meat. ये चीज इतनी क्रूशियल है और इसलिए बता रहा हूँ कि many students have this personal as well as religious belief which has been violated just because they were not familiar with these terms, और miscommunication हुआ कि वो कोई आउटलेट पे गए, उनसे पूछा कि वेजिटेरियन है, उन्होंने हाँ बोल दिया, दे सर्व द फूड, दे स्टार्टेड ईटिंग, देन दे केम टू नो दैट इट्स अ नॉन वेजिटेरियन फूड। सो हम जो वेज और नॉन वेज बोलते हैं इन टर्म से वो फेमिलियर नहीं है बहुत ज्यादा। उनकी जो स्टैंडर्ड टर्म है दैट इज नो मीट ऑप्शंस, right? So whenever you have to emphasize that you want to eat something veg, always use term, is it meat or no meat? Uh, Especially for boys, the second tip is very important. Dating culture in US. ये पास्ट में कुछ स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम हुई है, इसलिए ये डूज एंड डोंट का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रखा है मैंने। Whenever you are in university, you will see a lot of undergrad students also over there. And undergrad students are usually पार्टी फेज में ज्यादा होते हैं या मस्ती करने ज्यादा आए होते हैं, क्योंकि वो उनकी अंडरग्रेड लाइफ है, तो दे आर नॉट वेरी सीरियस अबाउट व्हाट दे वांट टू डू इन दोज टाइम्स। सो दिस हैज हैपेंड विद सम ऑफ दी स्टूडेंट्स हु डेटेड सम अंडरग्रेड स्टूडेंट हु टर्न्ड आउट टू बी अ माइनर। और यूएस में माइनर को डेट करने के बहुत सीवियर और ऑफेंसिव हो, यानी लॉ कॉन्सिक्वेंस उसके बहुत हार्श हैं। यू विल गेट अरेस्टेड फॉर दिस, सो मेक श्योर यू आर नॉट डेटिंग एनी माइनर। ठीक है, आपकी अंडरग्रेड यूनिवर्सिटी में अगर कोई स्टूडेंट है और आपको ऐसा लगता है, मेक श्योर यू आर आस्किंग एज एंड एवरीथिंग। इनफैक्ट टोटली अवॉइड डेटिंग अ माइनर। अंडरग्रेड स्टूडेंट्स को बिल्कुल ही अवॉइड करिएगा, क्योंकि इसमें बहुत बार प्रॉब्लम्स में आए कई बार। गर्ल इज नॉट कंप्लेनिंग, बट हर फ्रेंड्स, हर फैमिली पीपल और समबडी एल्स वुड कंप्लेन ऑन हर बिहाफ। ठीक है, कि किसी ने देख लिया कि आप दोनों जा रहे हैं और उसने कंप्लेन कर दी, तो लड़की ने तो कंप्लेन नहीं करी, बट उसके साथ में किसी ने भी कंप्लेन कर दी, तो यू विल गेट इनटू ट्रबल। सो जस्ट मेक श्योर do not date any minor in US, right? Drug testing is very serious in US, although many places they made it legal to consume marijuana. Weed आप ले सकते हो, वो legalize कर दिया है, medical marijuana को legal कर रखा है, but still बहुत सारे employers drug test करते हैं for internship as well as jobs. Especially financial institution and banks have this thorough process of testing you for drugs, right? अगर आपने किया है तो इनके ट्रेसेस 6 6 महीने तक बॉडी में रहते हैं, स्पेशली इन योर हेयर। सो कुछ ऑर्गेनाइजेशन दे गो टू सच एक्सटेंट कि वो आपका हेयर स्ट्रैंड भी टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप ड्रग्स वगैरह से थोड़ा दूर रहें, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज के रिक्रूटमेंट प्रोसेस में ड्रग टेस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट।
वो फेल कर गए तो आपने सब इंटरव्यू वगैरह निकाला था और आप एक लास्ट चीज के कारण रुक सकते हैं। सो ड्रग टेस्टिंग इज समथिंग वेरी सीरियस इन देयर वर्क कल्चर। सो मेक श्योर कि आप अबाइड करें इस रूल से। प्लेजरिज्म बड़ा डीपली इनग्रेन्ड है हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में कि हम कॉपी पेस्ट करने को बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं। यूएस में इट्स अ बिग वॉलेशन। आपने कुछ कॉपी पेस्ट किया है तो आपको यूनिवर्सिटी से बाहर भी किया जा सकता है, और ये हुआ है पास्ट में स्टूडेंट्स के साथ। राइट, कि उन्होंने असाइनमेंट्स कॉपी पेस्ट की हैं या टेस्ट के दौरान चीटिंग करी एक दूसरे का, या कोई असाइनमेंट एक दूसरे से निकाल के देख लिया है, या ऑनलाइन कुछ चीजें निकाली हैं फ्रॉम अदर सोर्सेज। सो प्लेजरिज्म इज a very strict no thing in US. Many universities have zero tolerance policy for plagiarism. Right? I remember two students, not in US, but they went to Canada because of plagiarism and cheating. उनको फर्स्ट सेमेस्टर में क्लास से बाहर कर दिया था, कोर्स से बाहर कर दिया था। यानी ये सिर्फ सस्पेंशन नहीं था, बाहर, कोर्स छोड़ के जाओ, ड्रॉप कर दो। सो यू हैव पुट सो मेनी थिंग्स ऑन स्टेक, योर मनी, एफर्ट्स, योर फैमिली, ड्रीम्स, एस्पिरेशंस, जस्ट फॉर वन थिंग। एज अ लूज मोमेंट मत आने दो जहाँ पे आप कॉपी पेस्ट करके चीजें सबमिट कर दो। चैट जीपीटी भी अभी बहुत जगह पे आप ये मेल्स वगैरह करने के लिए यूज कर सकते हो, बट फॉर सीरियस असाइनमेंट्स डू नॉट यूज चैट जीपीटी। यू कैन टेक आइडियाज फ्रॉम चैट जीपीटी, क्या लिखना है, कैसे लिखना है, उसको पैराफ्रेजिंग करो, खुद के वर्ड्स में लिखो और फिर सबमिट कर दो। बट चैट जीपीटी का एज इट इज वर्जन लेके मत लिखना। मेनी यूनिवर्सिटीज हैव स्टार्टेड यूजिंग प्लेजरिज्म चेक टूल एज वेल एज चैट जीपीटी एआई रिटर्न टूल्स ऑल्सो। तो वहां प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। ठीक है। ग्रीटिंग्स एक्सचेंज करना यूएस में बहुत नॉर्मल है। इंडिया में यूजुअली इफ वी एंटर अ बिल्डिंग एंड देयर इज अ वॉचमैन हु इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ बिल्डिंग, वी यूजुअली डू नॉट ग्रीट दैट गाय, राइट। इंडिया में पता नहीं क्यों छोटा समझा जाता है, या मैं इससे क्यों बात करूं अगर मेरा काम नहीं है। बट इन यूएस एक्सचेंज ग्रीट करना, सॉरी ग्रीट्स एक्सचेंज करना इज अ प्रीटी नॉर्मल थिंग फॉर द कल्चर। सो मेक श्योर वेन एवर यू आर क्रॉसिंग अक्रॉस a person, he could be a front desk guy, a liftman, anybody, or maybe watchman or security guy, आप exchange करो, how is your day going, is everything going good, right, good afternoon, good evening। तो ये सब वहाँ पे बहुत यूजुअल है, कल्चर का पार्ट है। सो मेक श्योर करना कि आप इसको एम्ब्रेस कर लें। मेडिकल चेकअप एंड डेंटल चेकअप बिफोर लीविंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिन लोगों के वीजाज हो चुके हैं, नाउ इज द टाइम जब आप अपना पूरा मेडिकल और डेंटल चेकअप कर लें, राइट। यूएस जाके बहुत लोगों को स्पेशली डेंटल इश्यूज आता है क्योंकि फूड ईटिंग हैबिट्स चेंज हो जाती है। कॉफी कंजम्पशन बहुत बढ़ जाता है। कॉफी जितना ज्यादा कंज्यूम करेंगे तो टीथ का टिके ज्यादा होता है उससे। सो मेक श्योर कि आप डेंटल चेकअप्स वगैरह करवा के यहाँ से जाएं, कुछ प्रॉब्लम हो, क्योंकि कई बार मैंने देखा है कुछ इंश्योरेंस पॉलिसीज में कुछ प्रोसेस कवर्ड नहीं होते हैं। ठीक है, आई फेस्ड अ सिमिलर चैलेंज इन माई टाइम। द इंश्योरेंस पॉलिसी विच आई हैड, extraction process was not covered in that. Root canal and other process were covered, but extraction was considered as a serious surgery, which my insurance policy was not covering. And I had an impacted wisdom tooth, right, which my insurance policy was not covering. And the cost of that extraction was coming about $1,600 in US। और ये मैं बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ। तो इसलिए हर चीज का वहाँ कॉस्ट इतना ज्यादा है कि आप यहाँ से देख कर जाएं। एंड व्हेन यू आर बाइंग दीज इंश्योरेंस, मेक श्योर कि आप उसमें डेंटल चेकअप में क्या क्या इंक्लूडेड है वो सब देख लें पहले लेने के पहले। सम पॉलिसीज आर वेरी इकोनॉमिकल, बट एट टाइम्स दे आर एक्सक्लूडिंग सम ऑफ द डेंटल ट्रीटमेंट्स। ठीक है, और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है क्योंकि दांत का पेन तो अनबेरेबल होता है, और एक बार चालू होगा तो आपकी पढ़ाई और सब कुछ अफेक्ट होगा। एंड यू कैन नॉट कम बैक टू इंडिया इन मिडिल ऑफ योर स्टडीज टू डू दिस प्रोसेस। मेक श्योर कि आप ये सब करवा के जाएं। स्पेशली फॉर वेल बीइंग ऑफ योर पेरेंट्स, व्हाट आई वुड से इज दैट अगर अभी तक आपके पेरेंट्स ने मेडिक्लेम्स वगैरह नहीं ले रखे हैं, तो यू बी दैट इन्फॉर्म्ड एंड एजुकेटेड पर्सन इन द फैमिली टू टेक मेडिक्लेम्स फॉर योर पेरेंट्स, एज वेल एज मेक श्योर कि उन सबका पेरेंट्स का बॉडी चेकअप आप करवा दें। आपकी वहाँ पे पढ़ाई बहुत डिमांडिंग है, लाइफ बहुत डिमांडिंग होने वाली है। अगर पेरेंट्स को यहाँ पे कोई तकलीफ या हेल्थ इश्यूज होंगे, सो आपका आधा टाइम यहाँ पे मन लगा रहेगा। You'll always feel guilty that I'm staying outside, I'm not able to do anything for my family. So make sure you're covering all of these things for your parents also जाने के पहले, so that you go with peace of mind कि मैंने फुल बॉडी चेकअप करवा लिया है दोनों पेरेंट्स का। In fact, make it a policy that every 6 months or maybe every year your parents are going through the entire body checkup, right? रिफ्रेन फ्रॉम स्टिकिंग टू योर कंफर्ट जोन, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि स्टूडेंट्स यहाँ से जाके अपना एक 3-4 इंडियंस का ग्रुप बना लेते हैं
and then entire 2 years they are only staying with those 3 4 students, right? The biggest damage that you guys would do in that scenario is that comfort zone to hai, but not interacting with other students, you are not letting your personality develop. With diversity, you add many facets to your personality which you will be missing out on. ठीक है, मेक श्योर आपके ग्रुप्स डाइवर्स हों. ठीक है, आप 3 4 इंडियन स्टूडेंट्स के साथ रहते हैं, बट आपके ग्रुप्स डाइवर्स होने चाहिए. मेक श्योर आप यूनिवर्सिटी के कोई क्लब्स होते हैं, एक्टिविटीज होती है, उन सब में पार्टिसिपेट करिए. देयर इज अ नॉन प्रॉफिट सेंटर इन द यूनिवर्सिटी, आप उसमें जाके पार्टिसिपेट करिए. एंड दिस इज हाउ योर कल्चरल एक्सचेंज वुड हैपन विद other country students also, with American students also. You're leaving this 130 CR population not to meet more Indians over there, right? आप यहाँ से इतनी दूर से जा रहे हैं फॉर दैट कल्चरल एक्सचेंज. मेक श्योर कि आप डाइवर्स ग्रुप्स बनाएं अपने. ठीक है, बियॉन्ड इंडियंस भी रहें, तभी आपकी पर्सनैलिटी और चीजें इंप्रूव होंगी. Avoid talking about sensitive topics whenever you're meeting Americans or new people over there. These are some topics you should not talk about. Politics, religion. Asking salaries is a very usual thing in India. That हम किसी रैंडम आदमी से पूछ लेते हैं, अच्छा इसमें क्या सैलरी है, तो वो बता भी देता है. यूएस में it's an offense. It's a very personal question. People do not like to discuss their finances, right? अभी इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे फिर भी चलन हो गया है कि some influencers they go and directly ask how much money do you make, what do you do for living, right? But this is not a very usual part of culture. Many people would get offended if you ask them their salaries, marriage plans, शादी कब करोगे, ये सब हमें नहीं पूछना है, इस तरह की बातें. ठीक है. ड्रिंक एंड ड्राइव इज अ वेरी सीरियस ऑफेंस इन यूएस. ड्राइविंग अंडर इन्फ्लुएंस इज सच अ सीरियस ऑफेंस that it is considered as इक्वल टू अनअटेम्प्टेड अनइंटेंशनल मर्डर की कैटेगरी में रखा जाता है. जो ऑफेंस वो लगाते हैं वो आप पे अनइंटेंशनल मर्डर की कैटेगरी का ऑफेंस लगाते हैं. क्योंकि डीवाई में आप तो अपनी जान के लिए परवाह नहीं कर रहे हैं, बट यू आर पुटिंग समबडी एल्सेस लाइफ इन डेंजर. A person who is not drunk and who is following all rules, maybe you'll bump into that person. With that accident, he can lose his life, right? So they are more worried about the other person. That's why when they catch you in DUI, usually the offense is unintentional murder करने जा रहे थे. तो ये बहुत सीरियस है, और एक बार डीओआई आपकी हिस्ट्री में आ जाता है, आपके सोशल सिक्योरिटी में आ जाता है, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट. एम्प्लॉयर्स को भी दिखता है, सबको दिखता है, आपको इंटरव्यूज और हर जगह पे परेशानी होगी. आप जब एयरपोर्ट से इंडिया होगे तो इमिग्रेशन चेक पे भी आपसे पूछा जाए. तो ये खैर मेरे इतना बोलने के बाद भी हर साल आई फाइंड 7 8 स्टूडेंट्स एवरी ईयर हु वुड रीच आउट टू मी दैट आई वाज कॉट इन डीओआई. तो एक बार कैच हो गए तब तो कुछ भी नहीं कर सकते, फिर लॉयर्स करो और बहुत खर्चा होता है. ठीक है, सो मेक श्योर आप इन सब डूज एंड डोंट से अवॉइड करें, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, राइट? एनीथिंग एल्स यू गाइस वांटेड टू आस्क और डिस्कस विद मी? So Vikas, there's a question when to pay the fees for the university. So every university is going to give you a deadline, Vikas. Usually that is, let's say your university is starting from 15th of August, right? So they'll give you at least 10 days of time to pay this amount, the first semester fee. So usually the grace period would be 25th of August. So 15 to 25th तक का आपको वो टाइम दे देंगे कि इस बीच में विकास आप अपना फर्स्ट सेमेस्टर का फी पे कर देना. If you do not pay by this time, they would have mentioned that what fine or charges or interest they would be putting up on that, right? Sahil, what about DL? Because the Indian government is also providing. ये important question है साहिल का, मैं इधर डाल भी देता हूँ कि international driving license is not required. International driving license is only required if your driving license was not in English. ठीक है. Most states in US would allow you to drive cars for first 6 months, Sahil, on your Indian driving license, provided your driving license should be in English, right? अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस इंग्लिश में नहीं होता है, उस केस में इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस वुड ट्रांसलेट दैट इनटू इंग्लिश, एंड दैट्स द ओनली रेलेवेंस ऑफ इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस, राइट? सो ऐसा कोई रूल नहीं है कि इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए आपके पास. इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस विच इज मेंशन्ड इन इंग्लिश इज फाइन. 6 मंथ्स के लिए अलाउ करते हैं बहुत सारे स्टेट्स आपको. जब भी आप जिस यूनिवर्सिटी पहुंच रहे हैं वहां पता कर लीजिएगा कि रूल क्या है, बट फर्स्ट 6 मंथ्स के लिए दे अलाउ यू टू ड्राइव ऑन योर इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस. अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताना भूल गया हूँ. बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में जो प्रोसेस है कोर्स रजिस्टर करने का, वो आप पे ही छोड़ा गया है.
तो ऐसा अज्यूम मत करना कि आप वहां जाएंगे और आपको पढ़ाना वो लोग चालू कर देंगे। यू विल हैव टू रजिस्टर फॉर योर क्लासेस। सो कीप चेकिंग योर ईमेल्स। यूनिवर्सिटीज ने जैसे ही आपने डिपॉजिट कंफर्म कर दिया है और अपनी आगे की प्रोसेस कर ली है, यूनिवर्सिटी ने आपको कोर्स स्केड्यूल भेजा होगा और क्लास रजिस्ट्रेशन की एक डेडलाइन या पोर्टल पे दिखा रहा होगा, नॉट ऑन ईमेल, मे बी ऑन द यूनिवर्सिटी अकाउंट पोर्टल इफ यू गो। तो वहां पे वो दिखा रहा होगा कि कोर्स रजिस्ट्रेशन की ये डेडलाइन है, इस टाइम तक आपको कोर्स रजिस्टर करना है और ये क्लासेस इस सेमेस्टर में दी जा रही है। निशा, पोर्टल पे मिल जाएगा यूनिवर्सिटी की, जो आपका पोर्टल अकाउंट क्रिएट है वहां पे, और अगर वहां नहीं मिल रहा है तो यू कैन ऑलवेज ईमेल देयर स्टूडेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट, दे कैन गिव यू द डेडलाइन। ठीक है, कई यूनिवर्सिटीज कोर्स रजिस्टर करने के पहले ही आपसे पैसा मांग लेती हैं कि अगर कोर्स रजिस्टर करना है तो पे अस दिस अमाउंट, देन ओनली यू कैन रजिस्टर फॉर द कोर्स। मोस्ट यूनिवर्सिटीज में आप कोर्स रजिस्टर कर सकते हो विदाउट पेइंग द फीस। आपको ईमेल्स आना चालू भी हो गए होंगे सब स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो वहाँ पे कोर्स लेना बहुत कुछ अपने हाथ में होता है, तो आप मेक श्योर करना कि आप कोर्स के लिए रजिस्टर कर रहे हो। ठीक है, मिस मत कर देना, नहीं तो वो क्लास आपकी चली जाएगी आपके हाथ से। सानिद, आप अपनी यूनिवर्सिटी बता देना। आई विल कनेक्ट यू विद समबडी इफ देयर इज अ स्टूडेंट ओवर देयर, आई विल डेफिनेटली कनेक्ट यू विद दैट स्टूडेंट। जस्ट अ मोमेंट प्रणव, मैं कर देता हूँ आपको अनम्यूट। यस प्रणव। Yeah, hi, sir. So I had my visa interview on 25th. I had a little strange experience. Sorry, So, sorry, I did not get you. What was the first part you said? sir, I had my visa interview on the 25th. Okay, Pranav. Yeah. So I had a bit strange experience. So before the interview, within the premises, they were checking in one of the booths. They were checking the passports, and the person who checked my passport asked me to stand in some other queue where there were around just two people except me Uh-huh. out of all those 200 odd people. So when they checked my passport, they asked me to submit all the documents, whatever I was carrying, Mm-hmm. my passbooks, every document, my Mm-hmm. certificates, original certificates, and हाँ all. हाँ. And then my interview happened after that. So I Okay. was just curious why this happened and should I be worried So about it or sometimes what happens is, Pranav, that your name matches with some person who has done some fraudulent activity in past. So it's there in their database sometimes. So because just the name is matching, sometimes they get suspicion कि ये वो person हो सकता है. Did he randomly walk to you, और उसको पता था कि आपका नाम प्रणव भाटिया है? Sorry. sorry, sir, I noted myself. Okay, so no, sir. After checking my passport, after probably entering my passport number on their computer, they asked me to stand in So under the maybe queue. something might have matched in their database, Pranav. You don't have to be worried about that. क्योंकि अगर कुछ होता तो वो वीजा वगैरह अप्रूव भी नहीं करते अगर कुछ प्रॉब्लम होती है। ठीक है. Okay, sir. ये इनफैक्ट आपका पोर्ट ऑफ एंट्री पे भी ये प्रॉब्लम्स आप सब में से किसी को हो सकती है कि रैंडमली यू विल बी कॉल्ड आउट फ्रॉम द क्यू एंड यू विल बी टेकिंग टू रूम वेयर दे आस्क यू क्वेश्चंस फ्रॉम वेयर यू हैव कम, व्हिच यूनिवर्सिटी यू आर गोइंग टू, शो मी योर डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल। जस्ट मेक श्योर इफ यू हैव मैनिपुलेटेड समथिंग, do not keep trace or evidence of those things. चैट, कॉन्वर्सेशन, ईमेल्स, ये सब डिलीट कर देना अपने लैपटॉप व्हाट्सएप से आप लोग। अगर आपने कहीं पे कोई मैनिपुलेशंस किए हैं, मैनिपुलेशंस एज ए कुछ वर्क एक्सपीरियंस ऊपर नीचे किया था या कुछ झूठ बताया था या कुछ भी आपने ऊपर नीचे करी हैं चीजें, सो मेक श्योर यू आर डिलीटिंग दोज ट्रेसेस फ्रॉम ईमेल्स, फ्रॉम व्हाट्सएप। यहाँ सबसे हटा दीजिएगा। एयरपोर्ट पे कई बार ऐसा हुआ है कि लोगों को पकड़ा है इन चीजों के लिए। ठीक है, कि Okay. आपने जो Also, लोग sir, लेटर how much time प्रिपेयर। does it usually take? Okay, How sorry. much time for what? Hello. Yeah, Sorry. I'm audible, sir. Yeah, Pranav. So, how much time does it usually take for after the visa interview when it says approved to get issued? So usually 5 to 6 days. आपका कब हो गया था प्रणव? So it was on the 25th. 25th ना, तो रुक जाओ, अभी आ जाएगा आपका। ठीक है, sir. Okay. Thank you so much, sir. Right?
So Sanid, for UIUC, MSIM, we have plenty of students, but most of them have graduated. I will try to see if last year some students have gone, but we have got 40 to 50 students who have gone to this program in past. ठीक है, तो मैं आपको कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा उसमें से किसी स्टूडेंट से। आप लोग मेरे लिंक्डइन पे कनेक्ट हो जाओ, तो लिंक्डइन पे आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स मिल जाएंगे आपकी यूनिवर्सिटी जाने वाले। ठीक है, यू कैन फाइंड मी ऑन लिंक्डइन। आई विल जस्ट पोस्ट माय लिंक्डइन प्रोफाइल ओवर हियर। Sahil has a question. Sanjana told me to Sahil, serious advice है लेके चलना। The more presentable you look in your interview, the better are your chances. First impression is last impression, right? तो ऐसा भी नहीं होगा कि पासपोर्ट में वो समझ ही नहीं पाएंगे कि तुम हो कि नहीं हो। इतना भी प्रॉब्लम नहीं होगा। Soumya, what answer can I give if I'm not traveling directly to the city? My so Soumya, इसमें थोड़ा सा problem आता है. If you're not directly traveling to your university, they might ask you why you have landed to this place. So in that case, थोड़ा सा quick और अच्छा communication रखना अपना. Make visa officer understand that you have some relative or friends whom you wanted to visit first, and then they'll be helping you go to the university. They'll be dropping you to the university, right? So आता है कंसर्न या क्वेश्चन तो आता है, अगर आप अलग सिटी के एयरपोर्ट पे जा रहे हो तो पूछेंगे आपसे कि आप इधर क्यों आए। श्रेया, बाय व्हाट टाइम वन कैन गिव एनपीटी एग्जाम फॉर फिजियोथेरेपी लाइसेंसिंग? फर्स्ट ईयर के एंड पे श्रेया। ठीक है, यू कैन गिव इट इन दी एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, मे बी द मिडिल ऑफ सेकेंड ईयर। सौम्य, कैन आई से आई फाउंड अ फ्रेंड एंड वी आर ट्रैवलिंग टुगेदर? डोंट से दीज रैंडम थिंग्स कि मुझे एकदम से फ्रेंड मिल गया है और ये नहीं। कोई पुराना फ्रेंड है जो बहुत साल से रहता है उसको बताओ, कोई फैमिली या रिलेटिव्स रहता है उसको बताओ। तो ऐसी चीज मत बोलना कि मेरे को एक रैंडम फ्रेंड मिल गया है मैं उसके साथ जा रहा हूँ। ठीक है सोम। So I hope the session was helpful for the students who were not able to attend this session. The recording would be there, or maybe you have started in the middle of session. So the recording of this entire webinar would be there in the group. Make sure you're using Skill Maestro app. उसको नोटिफिकेशंस ऑन करके रखिए, उसमें कभी भी हम कोई फॉरवर्ड्स नहीं भेजते हैं, सारी काम की चीजें हैं। सो एट टाइम्स अबाउट इंटर्नशिप्स, फुल टाइम जॉब्स, ऐसा कुछ भी आएगा पास स्टूडेंट से, सो आई विल बी पोस्टिंग दैट इन द ग्रुप। सो मेक श्योर यू आर यूजिंग द ऐप एक्टिवली। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स।